Good morning, all. Why to wait till others join? So we have used 17 minutes of this session. So let us start. Uh, Today's counselor is Dr. Sunil Londe, who is a very experienced and senior researcher in the field of remote sensing. With his educational background in soil science, that is pedology, both masters and the PhD. He is one of the few persons in the country who having experience of not means from uh, generating spectra for different kinds of earth surface features, including soil, agriculture, crop, different types, and from there to analyze remote sensing images and come out with some outputs that is much sought after for various kinds of soil management, land degradation studies, and also for crop agriculture related studies. And I had a good privilege to work with him, work with Dr. Sunil Rode sir, while I was in Center for Urban Advanced Computing. So we worked together in a project on specifically on the land degradation mapping of the entire Bihar and also part of central UP. So those maps and outputs and the process methodology, everything is available in the Bhuvan portal. You can, if anyone is interested, they can check that, and that contains maps and methodology. So, and after that, sir has been very kind to contribute to our master's program in as course writers, and also he has a keen interest with guiding students. So despite his extremely busy schedule, uh, he is willing to spare his time, his personal time, uh, to 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 interact with you all and share his experience. So with this very short introduction, I request Sunil sir to start the session. But just one more minute. I request all the participants. Uh, there are not many participants here. So, but you inform your friends so that they can take benefit of sir's experience. And this is not a lecture session. This is not a demo session. This is a counseling session. And as counseling, we understand that one has to practice in advance before coming to the session, and whatever doubts they may have with regard to the topic that is being covered in that particular session, that they can raise their queries to the counselor, and then they would try to address your queries. This is one. Second thing is, please do not share any links in the chat box. The links that has been given to you all, it is separate and specific for that particular batch. So do not share any links here, because that may confuse you. There are links differently for the PDF folders, for WhatsApp group, for different programs, PGCGI, PGDGI, and MSCGI. So please do not share any link without our consent, because that is going to confuse you and confuse your participants. If you have any query, whatever query you may have regarding administrative part, please contact your study center with regard to that, or regional center. There are many questions that will be answered if you read the program guide, respective program guides carefully. Okay, so the counselor is here to address only the academic queries, not related to any administrative part. That you can write to your study center, and maybe we may also be able to help you out with that, addressing your administrative queries if you have something. So I think with this background, I request you all to make also aware your friends to join this session, because attendance in the practical counseling session is mandatory to be eligible to appear in the practical examination. If one is not having sufficient attendance, one is not likely to be eligible or and be barred from taking up the examination. So please make sure
that you attend all the sessions. Thank you, sir, and thank you all participants. Please, I request Yone sir to please start. Good morning, all learners, and welcome to the session. Okay, so already we have taken 10-20 minutes for waiting to the learners. So I hope you are around 15-16 students here. So hope you have seen the schedule. Can you confirm? Sir, everybody has been sent a schedule, all the PGC learners in their email, and for PGDGI and MSCGI learners, so we have sent in the WhatsApp group. But we will try to again send that by email. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. And also, sir, most of them have access to the respective folder for the particular course. Again, I emphasize here that the folder that is given for PGDGI is different, and the folder that is given for MSCGI is different. So please do not share any link to the folder. You all of you have got the link in your respective email. So please check the email. Everybody has got that. No one can say that they are not received unless the mail has not been delivered. Only one person is there in the MSC group for whom there is a error in the email ID, and only that person has not received. So they should check their spam folder also. Thank you, sir. Okay. Thank you, Benidhar sir. So, what I will suggest for every learner before starting the session, so please try to go through the notes which are shared with you so that you will get some idea what you are going to do in the session, and preferably as suggested by Benidhar sir, you yourself go through the whole exercise and come up with your difficulty or hiccups where you are facing while performing the exercise. So if we go in this flow, then it will be very good for you. Again, you need not to go back to the notes, and you can easily handle the all the exercise uh, related to your course. Okay, so today's exercise is getting ready everything to work. That means you have to download the software, you have to install the software, and similarly you should get yourself acquainted with the basic functionalities of the software. Okay, the software which I am talking about is a quantum GIS QGIS. Okay, so you can open your notes and you can go one by one, and you can download the software. Okay, so there are two links given in your notes. One link is uh, uh, the qgs.org, that is one link, and another link is osgo. So you can download the software from the both the links. So you can choose any one link and you can download the software first. Once you download it, then you can install. Okay, so at the time of downloading, it will ask you whether you want to download the notes also. So you can tick it, you can say yes, so that the at the same time you will be having the software literature with you. Okay, so let me share you the screen and show you where are the links. uh, Entire screen. Okay, hope my screen is visual. Okay, this is the exercise. My screen is visible to all. Can you confirm? Yes, sir. Okay, thank you. So these notes you have with you, and you just read initial some background text and all. So in this exercise, what is expected from you, you should able to download and install the software, as well as get acquainted with the software. Okay, so you if when you come down, you will get the two links in the exercise.
see, in the installation section of the your exercise, you will get the link. One link is here. You can just copy paste here this link. I or there is another one link which is of OSGO. So this is that link. You can just click it. It will take you to your browser and you can download. See the as it is software, it will require a little bit good your this one internet bandwidth, so that you can easily download in a minimum amount of time. Okay, so what I will request you, put it on download, so that it will take maybe some 5-10 minutes depending on your internet speed, and then we can discuss in between about the GIS software, what type of softwares are there, what is the concept of open source as well as the proprietary software. And then I will also give a brief demo, because you all are on different pages. Maybe some of you might be using already using some GIS or remote sensing GIS based software. Someone will be very new. So to bring you all on the same page, I will just give you demo, broad demo, that will show you where are the where is the main menu, where are the different menu buttons, then on the software screen which section you will call what, like where is the your map window, then which is your legend window. So that brief demo also I will give, because in your text you will get these words like go to the main menu or something like that. So you will be able to find out where is the main menu. So that is the purpose. And at the same time, once you downloaded the software, so you successfully install on your system, then you will roam around to explore the different functionalities, I mean at least main functionalities of the uh, software. Okay, and then once we done with this, then we will understand the plugins. Okay, QGIS mainly works on the plugins. Okay, so I'll pause for a few minutes, so that you can go through the link and put it on download. Okay, so how many of you are already having the software installed on your system? Okay, though. Okay, good, good. At least two of you are having the software already installed. So what I will suggest, you just explore the different menus on the software. By that time, rest of them are installing the software. Yes, Saurabh, you also have. Okay, three of you are having the software installed. Good. And let me know if you are facing any issue in the software download or installation. Okay, by the way, while you are putting software on download, uh, these QGIS is very famous software, and even if you type on your browser QGIS, it will take you to that site. If you are not copying the list, it will take you to the OSGS, or it will take you to the QGIS website. So there also you will get the download option. So, sir, we have to download latest version of 4. I have already. Okay, there is question which version you have to download. You can download latest one, no problem. Once you know how to download, you can again anytime you can uninstall and again install. There is no issue. Please download desktop version.
Hope you are here on this QGIS web page, or you may be there on the OHGS project web. So from both the places you can download. Don't select this donate option. You select the next one and try to download it. Once you download, let me know you have downloaded the software. Okay. So in remote sensing GIS, basically you will be having two types of softwares. Okay. So what are these two types? Can anyone tell me? Okay, maybe the question might not be that much clear. See, I mean two types here. Open source and the proprietary software. Correct, correct, correct. There is some echo. I think please mute while you are not talking. So, as told by Senthil, he is right. There are two types of softwares. One is your proprietary softwares. Proprietary means someone is developed that software and they are doing commercial business out of it. Commercial business means in a very simple way, they will sell the customers license of the software. They will provide everything. They will sell the license. So use is based on some amount, some cost. So like market, you go, you pay something and you purchase and then you use. Same concept. And then open source. So these are not commercial softwares. Okay. So these are developed by some group of people or group of institutes, and they will put on some freely available platforms. That's why it's open source, and anyone can use it for the academic purpose. So any individual can use these softwares. Okay, so QGI is one of the open source software. There are other software like Saga GIS, Grass, and there are many more. So I'm not going into that. So one of the best software is QGIS, where you can have lot of things to do. Okay, and you need not to pay for it. You can use it free of the cost. Apart from this QGIS is having links with many other softwares like your Google Maps, like your Open Streets, where you need not to generate any sort of the data. Just for example, if you want to generate a road layer, or if you want to generate a say village location layer of a particular area. So what you can do, you can use your QGIS and you can go to that particular data set and simply you can download, or and you can use, you can perform different type of analysis. So basically there are two types. One is your open source category and another is your proprietary. But you should able to use both, because many of the functionalities are almost same. Maybe some options are here and there, but once you know how to operate the software, you can use both proprietary as well as the open source. Clear? Okay, so one more difference, like I believe you might have studied the theory also. You have certain understanding of your, say, the GIS database and the rest of the database. So, quickly, any one of you, while your download is in progress, can you tell me just a broad difference? What is the GIS database and the rest of the database? What is the difference? Any one of you, what is the difference in the GIS database and other database? You might have used some database in the form of Excel or in the form of Access or in any other form, even text also. So
hope are you comfort which language I should go, either in English, Hindi or mix? What is your preference? I mean the common preference. I am okay with English, Hindi both. Go with English, sir. English, okay. Padma is saying both. Shruti English. Okay, no problem. We can have mix and match both. Okay, no. KU, I don't know your name. It's coming written KU. Okay, no problem. I'll I will go with both the languages. So download is going on. Can you confirm? Is there any issue? Hope you have good internet. Okay, Padma is saying okay. ठीक है, let it go on. Okay, okay, Isha. So let it go on. It will take some time depending on your internet speed. No problem. Your database has coordinates and connected to maps. Okay, Preeti, fair good. So मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है? हमें बेसिक हम फंडा जानना चाहते हैं कि ये जीआईएस डाटा, वॉट एवर इट इज, मैप्स और एनीथिंग विच वी कॉल्ड जीआईएस डाटा, एंड अदर दूसरा भी डाटा है। तो लेमैन की लैंग्वेज में अगर कोई जानना चाहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों को कैसे हम बोलेंगे कि ये जीआईएस डाटा है और दूसरा जीआईएस डाटा नहीं है? क्विकली एनी वन ऑफ यू, या ये दूसरे वे में अगर मैं पूछता हूँ इसी क्वेश्चन को कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई जीआईएस डाटा है और दूसरा जो है जीआईएस डाटा नहीं है? जीआईएस डाटा या जो इट इट हैज कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्सटेंशंस ऑफ द फाइल। ओके, एक चीज तो बड़ी दो तीन बार आ रही फ्रिक्वेंटली कि उसको कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, इट हैज कोऑर्डिनेट्स। तो मैं आपको दूसरा ये एक इस पे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, मैं क्योंकि इसको थोड़ा और डिग डाउन करना चाहता हूँ। सुभाष इज स्पेशल एंड नॉन स्पेशल, ओके, वन इज स्पेशल डाटा एंड अनदर इज नॉन स्पेशल डाटा। उसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जब तक सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो रहा है। रास्टर एंड वेक्टर फॉर्मेट, लेट मी ओपन योर चार्ट, यू आर राइटिंग इन द चार्ट। Okay, here is my chart window. Okay, fine. Now I can see side by side your charts also. Okay. GIS data uses vector, point line polygons and raster grid format. Other database uses table, rows and column only. Okay, Isha, a very good response you have given. What you are saying, it is having point, line, polygon, or it may be having grid, correct? तो जो दूसरा डाटाबेस देख रहे कि उसमें ये अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। योर ऑल योर आंसर्स लाइक कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट लाइन पॉलीगॉन, all these are showing some of the characteristics of the geospatial data or you can say GIS data. Okay, so इसमें एक खासियत जरूर है जो आप चार्ट्स में मुझे बता रहे कि इसमें कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, इसका जो पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन और ग्रिड फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल और इसमें थोड़ा सा और जाते हैं अंदर। मान लीजिए कि एक डाटा है, कोई भी मैप है, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं आपके एरिया का मैप है, ठीक है, आपके तहसील या डिस्ट्रिक्ट का मैप है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो एक ऐसा मैप है आपके पास जीआईएस में जिसमें कोऑर्डिनेट्स है, ओके, वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड और आप कोऑर्डिनेट्स है उसमें, वो मैप प्रोजेक्टेड है, एक में कोऑर्डिनेट्स है और दूसरे में कोऑर्डिनेट्स नहीं है। सो जिसमें कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका क्या बेनिफिट है? जैसे आपको मान लीजिए कि
आपका जो डिस्ट्रिक्ट का मैप है उसमें आपको आपका जो घर जहाँ पे भी है, आपका लोकल प्लेस, आपका होम, उसको लोकेट करना है। तो कौन से मैप से आपको इजीली लोकेट कर सकते हो आप, और क्यों? सर्टेन गिवन कोऑर्डिनेट्स ग्रेट। और वर्ल्ड जो है वो अलग ग्रेड्स में डिवाइड हुआ होगा सर। तो जब हमें डेटा डाउनलोड करना पड़ता है तो हम उस पर्टिकुलर ग्रेड वाले डेटा को डाउनलोड करेंगे, बाकी सबको हम छेड़ेंगे, स्पेसिफिकेशन आ जाता है हमारे पास। ओके सुभाष, ओके। स्टिल थोड़ा और डिग डाउन करना है, और क्लैरिटी चाहिए इसमें। तो जिसमें कोऑर्डिनेट है या ग्रिड है, जैसे सुभाष बता रहे कि वो ग्रिड से आप एग्जैक्ट लोकेट उसको कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा और एक दूसरा हिंट देता हूँ। आप लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, इसके लिए यूज़ करते हैं? मेरे ख्याल से आजकल बिना गूगल मैप का तो किसी का भी ज़िंदगी चलता नहीं है। अगर नॉन रास्ते से जाना है तभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, गूगल लोकेशन लगा के उसमें चलते हैं, और रास्ता भी पता है तो बोलते हैं नहीं ट्रैफिक का सिचुएशन पता नहीं चलेगा, अगर ट्रैफिक कंजक्शन होगा तो दूसरा रास्ता गूगल दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये बेसिकली इसका क्या बेनिफिट क्या है? मान लीजिए एक मैप है विथ कोऑर्डिनेट, अनदर मैप है विदाउट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है उसमें, तो क्या बेनिफिट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है उसका? चलिए मैं और दूसरा एक हिंट इसमें दे रहा हूँ। सर, it provides a reference point for us to take the ground data from which करेक्ट, where we have to start. करेक्ट, रेफरेंस पॉइंट देता है, मिलता है आपको। ओके, सो ईशा हैज written GIS database used to geographic. Exactly, Isha, you have written perfectly. So I hope now it is we have more and more clarity. So in the nutshell, like if you have projected map, I mean what we call it is having its coordinates and all, so that is projected map. So that map will fit exactly on the ground, or it will precisely show your places or location, so it will exactly fit on the ground, whereas the map which is not projected or do not have projection, it will also show the same feature on the map, but it will not fit on the ground. Okay, so in the other way, what I can say, if you have say two maps, okay. Uh, Now earlier we were talking one projected map, that is map which is having coordinate, and another which is not having coordinates. So we are talking two different maps. Now I am having two maps which are having coordinates, and another two maps which do not have coordinates, or which are non projected maps. So if I want to do any analysis, for example, say I want to do analysis like I am having say my institute name was XYZ, and it is on say ABC road. Okay, so if I put I have this type of information, and I want to say now I am using some GIS analysis, and I want to say uh, I'll take the known example like your navigation maps you are using. You are tracing two locations and you are finding the road. You are finding the required uh, time to travel. So this information you are getting through your navigation maps. So where you can use many database, not only one or two, you can use many different layers, and these layers
They all are projected layers. Projected means they are having coordinates, so they talk with each other. Whereas if you take the two or more layers which are not projected or not having coordinate system, they won't understand their position. Like if it is a map of Pune, in a simple very crude way, if it is a say map of Pune, it may not sit on Pune, it may go to the New Delhi, because it doesn't have the coordinate system, it doesn't have the latitude, longitude, or projection information or coordinate information. So the whatever you talk in the language of GIS, it is always talking with respect to its position on the ground. Correct. So that is the difference between your GIS database and rest of the database. So you are always talking with the precise position of that respective objects on the ground. Perfect. Okay, so what is the status of the download? Anyone has completed or still it is going on? Please confirm. Uh, Padma, hope you have completed download. Completed. Okay. So download and install also completed. Good. Good. So everyone, once you have downloaded, you just start installing. So whatever version you have selected, no problem. You can just install it. So let me also open the QGIS on my system. So whole this exercise, we will make it as a fun. So we'll try to learn, we try to explore the software, and once you are get acquainted with the software functionalities, you can yourself explore many things. Okay, so it's fun. Even if you don't know the options, still you can find it option from the software. Okay, we'll see going forward the help part also, how to get the help. If you know the just a keyword what you want to do, just if you have some right keyword with you, you can find it out through the software itself. This is a very good software, and you have a lot of literature available. Even the help part is also good. Okay, once you install, then you will get the something GUI like this. Let me make it by default. Let me close these things. Okay, let me open one fresh. Or maybe you will be having here some uh, one more window. You open that also. Okay, no problem. You
install it, and once you install, you open it. Maybe some of the menus and buttons and even windows might be different for me and might be different for you also. So it again depends on the what menu buttons you have taken here. You can add, delete anytime. That will see going forward how to add, how to remove, how to manage these windows also. That we'll see. And again, depending on the version to version, because I believe you everyone might be using the different software versions, so there will be slight difference in that also.
So can you confirm everyone has installed? Installation done, yes. Okay, it is taking time. Okay, okay. So we'll wait. It may take time depending on your internet speed. Okay, we'll wait for a few more minutes. No problem. So what I will do? I'll give you some time to explore the different menus in the software. So today we'll install the software in the first hop. Then we'll explore the different functionalities, the nomenclature, what you call to particular, so the area of your GUI. So that we'll see, and then we'll use the plugins. Okay. So by the time still installation is going on, we'll just have little discussion on the plugins, so that you will come to know the importance of the plugins, how the plugins are used, how the plugins you can find out which plugin is right. If you don't want to use any plugin, then you how to remove it, again how to install it. So basically, when you go towards the more analytical part of the GIS using this software, you will require plugin almost at every analysis. Okay, and sometimes there will be the group of plugins, they you use together them to perform the different type of analysis. Okay, so basically, what is the plugin? Okay, so this software is your seeing this graphical user interface, that is GUI and different buttons. So this is the basic thing which you can uh, use, which you have to perform different analysis. Okay, so but if you want to perform something different, or in addition to what is our menu available here on GUI, then you require plugin. Okay, so basically, the plugin is developed by some of the developers in the geospatial community. Okay, again, as the software is open source software, these plugins are free of the cost. You only thing you have to download it. You have to choose the right plugin, and then you have to download it. Okay, so these plugins are developed by the freelancers freely, and given to the OSGO. OSGO is a platform, is a project where all these QGIS development activities are bundled it and kept on the web platform. Okay, so these plugins, what you have to do, you have to install it first, and then once you install, then these plugins will be available for analysis, like whatever buttons and menus you can see here on the screen. In a similar fashion, you can use that plugins. Okay, there are some one or two steps to call each plugin in the analysis, uh, and you can use it. Once the work is over and you think, I don't want this plugin right now, so you can uninstall it. So it's a simple process, just 2 3 click process, that we will see once you install. Then we'll see how to manage the plugins in the QGIS. So plugins are very very handy tools, and you can use it. And once you become expert, more and more expert, maybe you are having some, say, programming background also,
So you can also develop your own plugin, and again you can give to the OSGO. Okay, fine. So these are the plugins. So this we will see once we explore the software menu to certain extent, and then we can see plugins also. So this exercise I want everyone to be get good familiarity with this software, so that you will not struggle in between while performing the other exercises. Okay. So is there any issue with anyone in the installation? I believe everyone is having downloaded copy with you. You can keep this copy on your drive, so that uh, in case if you want to reinstall, you need not to download. Okay. Now some of you might have used the older versions for the download, you and want to upgrade. So this software, there are two things for the upgradation. Some of the version directly you can upgrade to the higher version, but in some of the versions you need to freshly download and install separately. So you can, in that scenario, you might be having two or more QGS versions. Okay, fine. So everyone is having now software installed. Let me know if you are struggling or stuck up somewhere. Nazreen, you done with installation or still going on? Oh, not downloaded it. Okay, okay. Please check your internet connectivity. Those who are struggling with downloading, please check your internet connectivity. If it is uh, not that much good, you may change your connectivity also. And I will suggest for all these practical sessions, you require a good internet connectivity. Okay, so based on my past experience, so we have generally two sessions in a day, morning and evening. So right from 10 to 6 o'clock. So more than 3 GB data will be consumed per day. Please arrange connectivity in that way. So minimum around 3 GB plus data you will require daily, because one part is like our this connectivity through the Zoom, that will consume some data. Plus, almost in every exercise we are downloading some images. Okay, some satellite data. See, if you are downloading one scene, so it it, it will take more than 600 700 MB. So if we download two data or three data, so you require lot of bandwidth. So plan your connectivity so that you will be having minimum 3 GB available per day.
Yes, Deepak, yes, you are right. That's why for some of you it may take some time. Depending on your version, it is taking almost more than half GB. Okay, no worries. We'll wait still few more minutes because until and unless you have software on your system, we cannot do anything further because software required. Without software, we cannot perform any exercise. So it's a big software. Once you work on it, then you will appreciate its capability. It is having both vector, raster, and a lot of cross-platform connectivity also. And apart from that, the plugin part is separate. So that is need base you are using it. So without plugin, this is taking that much memory. Okay, Nazreen, good. Let it get installed. So while installing it, it might be asking you for the desktop icon. You can say yes, so that every time you need not to go into the program and open from there. You can create desktop icon. You can put this on your taskbar below also. So you can quickly launch it when you want to work. Jaydev, you want to say something? Okay. Is that MSc Geoinformatic practical learning started? Hello, Sunil sir. Yes, yes, बताइए. Yes, good morning, sir. Good morning, good morning. Sir, Jaidev Singh Rathod this side from MSc GI student from Marsing Nagpur. Mm-hmm. Recently, I just get the link for the subject 4 regarding the practical learning. So, is this Mm-hmm. started already or? Uh, Uh, yeah, this is I think for PGCGI, PGDGI, and MSc. You belong to which course? MSc Geoinformatics, MSc GI. Okay. Hello. MSCGI. You belong to MSCGI, right? Yes, yes, sir.
Yeah, this is first practical class. Today we have started. Okay, okay, sir. Yeah. So then you have to download the QGIS. I hope now everyone is ready with the software, or still some downloading and installing is going on for some of the learners. Can you confirm? Okay, you done. Anyone face any issue in downloading and installing? I mean, other than the internet connectivity and slow download, that is not in our hand. That Sir, is, can you please send me the link in the messenger, like, for the software? uh, I can send you the link, but I will suggest please open your this one practical manual, and you will get link in that also. But I can also share. But rest of the things you need to go through your this one uh, practical notes. Yeah, I have put the link in the chat. You can use this, but side by side you can also open your practical manual. Okay, now finish up. We'll wait for 2 3 minutes more, and then I will show you the main functions in the software, the GUI.
Okay, I think few more students have checked in. May I know who has joined recently? Sure, I have joined. My name is Oh, Vinodi. I'm from SLRC. okay, okay. So please open the exercise depending on the which course you belong to, and we have to install QGIS. If you have already installed, then no problem. You have QGIS installed on your system. Yes, sir. Okay, then no problem. So those who are joining, so bit late. So and if you don't have the software installed, you have to install the software. Hope my screen is visible. So now these those who are a little bit familiar with the QGIS, you might be knowing the functionalities of the software. But those who are very new, maybe first time installing and using the software, for those learners, it will be uh, to get themselves familiar with the software. Okay, so once you installed, hopefully you might be getting something like this window. May not be exactly same, but something like this window you might be getting on your software. Okay, once you have this window, so what are the things there, how to read and understand and get it familiar with the software. Okay, that part is simple but very important. Once you know these functionalities, you can easily access that part, that function, particular function or particular activity in the software. Okay, now I'll just highlight three four things. There are huge, I mean this software is just like a sea. You have lot many things there, and if one explores it, it is never ending type of the things depending on our particular operation. We explore the software, but there are many, like this software is used in many of the applications, like from the simple map preparation to the advanced analysis in almost many domains like agriculture, forestry, oceanography, aviation. It is having huge applications. Okay, so what I will do, I will try to explore some of the functionalities here. Okay, I need to put on the charge. Okay, so hope my cursor is visible. Can anyone confirm? You can see my Yes, sir. cursor, right? Okay, so here on the your top left corner, you will get QGIS, this one logo and some text written in front of it. Okay, what it is, what you call. Okay, these main functionalities are also given in your practical notes also. This is what title bar. This is this where I'm moving the cursor. This first text along with it is a title bar. Okay, so
When you are having say different projects, say for example, you assume that now you are GIS expert and you are working in GIS. So you will be having multiple projects. Just I am giving an hypothetical example. You will be having multiple projects and you are working simultaneously on the different projects. So this one project will be having your one, say this title bar. When you open many projects, it will be having tabs like this. Say for one tab will be exercise 14 data, another tab will be my exercise 10, another project will be my something else. So in a single window also we can manage different projects. So this is my title bar. Okay, the second you can see here below title bar there is project, edit, view, layer, settings, vector, raster. Okay, you can see these buttons here. So this is your main menu bar. What is this? Is called main menu bar. Why I am explaining? Because in your practical notes it will be written somewhere like go to the main menu and click this button, then some window will pop up, something like that it will be written. But if you don't know, or you are failing the difficulty to identify the main menu bar, then you will feel little difficulty. So please remember this is your main menu bar. Don't worry, I'm going to give you sufficient time to explore each of these buttons after this demonstration. Okay, so further to this main menu, below that you can see here many buttons. Can you notice? There are many buttons here. This is your menu bar, right? So in my case, hopefully there are more buttons because I have added for some exercise. So in your case, there might be this one line or maybe two lines depending on uh, the version you are using. So always you can remove or you can add this. Okay, it's very simple to remove and add. You just, what I did, I just right click on it. Please remember this. You right click on this and you can just check in whatever you want. If you want, just for example, I want this help toolbar. Just I will click on this. So somewhere the help toolbar has come. Where it is located? There are so many buttons. So somewhere it is coming here. Similarly, if you don't want anything, for example, I don't want this advanced editing toolbar, I can just uncheck it. So this third one of the row, whole row went up. So anytime you can add, you can remove as per your requirement. So remember this is your menu buttons. Okay, now coming to the next part, here you can see some map is displayed. Okay, so some map is displayed here. So this is called your map view. What is called map view? So whatever map you are you want to work on or you want to display, so it will be available in this window. This is the main engine. This is the main engine. Whatever you do, any process, anything in this software, the output will be displayed here. Okay, this is the main engine of the QGIS where you get the display. Now exact to the left side here. Okay, here where is the my cursor? So this you have listen panel. Okay, so you can, some of you might be having this panel here or somewhere else also, you locate it. Okay, the title will be layers and you can place this at appropriate place where you feel you should have it, or where you
think visually is more convenient for you, you can always place. Now, what it does, that is also important for us. What it does, like you check it, uncheck it. Now, right now I have unchecked. Just wait for a moment. I am putting my battery on. Okay, while I am putting my battery on, so I'll just explain. This is, you can check in, check on, off. So the maps will be displayed accordingly. For example, I want this map, I can check this. So another map has displayed. So those who are up, they will get priority. Below layers, they will be hiding below, on the top layer. So similarly, you can group also these layers. You can also group these layers into one, like 2 3 layers you can group into one. That also you can do. Okay, fine. Now below this, you can see, if I move the cursor, some values are changing here. You can see here at the bottom. Okay, so these are the coordinates which are changing. At the right side, you can get the scale here. Scale means if you zoom it, see scale is changing. Okay, so what I will suggest, maybe you can put some time, explore it, each one, how, what they are doing. You put if you have any layers with you, you put any dummy layer, or empty canvas also will open, will work. You check this one and get yourself familiar with these menus, or with the QGI GUI. Okay, so I'll give some time. You go and make yourself familiar. If you have any issues, we can always discuss. Okay. Slowly you have to explore the each one and get its feel. Like if you are going through the main menu, then you have to see what it button is for what, get it feel for what it is used.
Okay, we are going to use almost most of them, but before that you get yourself acquainted. Are you able to explore the different menus on the GUI? Okay, okay, good. Please put some time and see what each each button, each part of the GUI is meant for. Because until and unless we do on ourselves, it will not make sense. It will not be convincing for us. Hello, Sulu sir.
Yeah, Manikanta, you want to say something? Manikanta Prasad, your hand is raised. Vinay, Vinay Surya, you want to say something? Am I audible? Yes, yes, sir. Okay. Manikanta and Surya, you want to say something? Because I see your hands are raised. Yes, Jaydev. Shall we get the recording of these training videos later also? Uh, I hope every time it is available. Hopefully, this time might be available, but maybe you can confirm from your respective center. Yes, Preeti. Sir, from where to add that raster dataset source? I mean, I have opened that raster from layer order. Correct, correct. Okay, because this is our first exercise. You may not be having any raster or any data on your system right now. Hmm. So going forward in the further exercise, we'll be downloading some raster data as well. At that time, you can add the raster. Okay. So right now, only you might be exploring the add menu, uh, how to add the layer, either raster or vector. So when you click on the layer menu, you might be getting add layer, and in the add layer, then it might be asking you raster, vector, and options, other options. So right now we don't have data. If you have data, you can just uh, go to that particular directory, select the data, and add. Okay, but that is good. You explored that. So this once you have the layer, you can add it, and the layer will be displayed in the map view. Okay, Okay, sir. Sir, yeah. what is Once this we referencer tab in yeah this? Huh. Yes, yes. That's why I want you guys to explore the different menu buttons. That georeferencing is to project the map, provide its coordinates. Like morning, we have discussed the GIS data will be having coordinates. So any data if you have with you, so you give the that particular data set's coordinates. So that menu is used for that. You go to the georeferencing menu,
and from that further you will select what type of georeferencing you want to do. Like you have already one georeference map, you use that georeference map to give projection or coordinates to the ungeoreference map. That means the map which is not having coordinates. So you use the known map to give coordinates to the unknown map, so that both will be coming into your GIS database. So that menu is used for that. That's why good you are exploring, you explore maximum, try to see for what it is used. Maybe because this is our first exercise, you may not get the right feel for each and every menu button, but at least you will get yourself acquainted and familiar with the software. At least uh, you know georeferencing, okay, there is something georeferencing at this corner of the GUI. So quickly during the exercise you can explore and use that particular menu button. Sir, what is meant by rendering order? Render and rendering order. Yeah, where you find it? Below the layer order, control rendering order. Yeah. See, rendering order, you create different type of renders. I mean, using 2 3 layers. For example, you use like each raster will be having multiple layers in it. Okay, you combine all, and you view all these bands together. Okay, so in the raster we have the exercise on it. We'll see detail there, but basically you combine many layers and see in one go. All the say 3 4 layers, you put it together and you render it, and you can visualize. Like in a very simple way, if I say, like our eyes are also using say 3 different colors: blue, green, and red. Okay, so but the data, for example satellite data, you will be having band 1, that is blue will be separate, red will be separate, green will be separate. You will be having 3 layers, 3 different layers of this. You put all 3 layers together and you see the data in the 3 bands like our eyes see. Okay, so the rendering is a big part of the subject, and it's very useful, but we have exercised it on it. There you are going to use the rendering part. Okay. Yeah, so as I told, this software is a huge. As you explore more, you will get mm, yourself more familiar with the software. You try to explore as much as possible, but apart from that, at least the main parts of the GUI we should know, so that rest of the operations we can do very smoothly. Sir, is it possible that you can explain in the Hindi so for the better understanding? यस यस श्योरली, करेंगे करेंगे, मैं भूल गया इन बिटवीन। मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि आई यूज बोथ द लैंग्वेजेस। सो Yes, yes. कई Thank you, sir. कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सॉफ्टवेयर। इसमें देखिए, ऑपरेशन में हमें कहाँ प्रॉब्लम आता है, मेन प्रॉब्लम आता है हमें, प्रॉब्लम तो समझ में आता है क्या करना है, क्या करना है ये जब समझ में आता है, तो दूसरा सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर में ये करने के लिए मुझे कहाँ जाना है। तो वो कहाँ जाना है, वो पता होने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के अलग अलग जो फंक्शनलिटीज है वो पता होनी जरूरी है। और वो इसके लिए हम खुद को उससे थोड़ा सा फैमिलियर कर रहे हैं अभी, कि कौन सा मेनू कहाँ पे है, कौन सा अगर मुझे ऑपरेशन करना है तो मैं कहाँ से करूँगा तो इजीली हो जाएगा।
और वैसे भी बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। वंस आप थोड़ा इसके साथ फैमिलियर हो जाओ, काम करना शुरू करोगे ना तो मज़ा आएगा। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सारा चीज़ मेनू ड्रिवन है, एक्सेप्ट फ्यू देयर आर सम एडवांस पार्ट वेयर यू विल बी हैविंग सम, क्या बोलते हैं उसको, पार्टली कोड मिलेगा और पार्टली उस कोड को आप मॉडिफाई करते हो, या जो एग्जिस्टिंग कोड है उसमें थोड़ा सा एडिशन डिलीशन करके आप करते हो, वो पार्ट थोड़ा सा अलग है। बाकी एवरीथिंग इज मेनू ड्रिवन। हर हर चीज़ इसमें मेनू ड्रिवन है। आपको बस ऑप्शन पता होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें, वंस एक बार आपको ऑप्शन पता कहाँ पे है वो अगर पता है तो वो हो जाएगा आपका ऑपरेशन। अगर मान लीजिए वो फिर ऑप्शन के अंदर कुछ सिलेक्शन में या चूज़ करने में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो क्या होगा, इधर ये रन नहीं होगा या थोड़ा सा आपका आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं आएगा। फिर आप उसको दोबारा करोगे तो आप कर लोगे, मैनेज हो जाएगा। बहुत यूज़र फ्रेंडली है। आपको अगर पता है कि मुझे ये करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑप्शन है, जैसे सादा एक ऑपरेशन है क्लिप करना। आपको पता है क्लिप मतलब मुझे कट करना है इसमें से कुछ, तो वो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये वेक्टर को क्लिप करना है क्या रास्टर को करना है, फिर ये वेक्टर के मेनू में मिलेगा या रास्टर के मेनू में मिलेगा। ये सब थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए ना आपको एक बार सॉफ्टवेयर का, तो आप खुद ही उसका ऑप्शन खोज के वो एप्लीकेशन रन करके आप कर सकते हो। बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, किसी को भी इसमें थोड़ा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप अपने सिस्टम पे है, जहाँ पे भी दिक्कत आएगी हम स्क्रीन शेयर करके इसको एक्सप्लोर करके जहाँ पे भी दिक्कत है उसको हम कर लेंगे। बस आपको सिर्फ एक ही इसमें ध्यान देना है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने एक्सपर्ट बनोगे। ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस पे दिक्कत आएगी। आप सिर्फ इसमें क्या है, जैसे आपके सबके पास अभी थ्योरी नोट्स है, सॉरी प्रैक्टिकल नोट्स सबके पास है। आप बोलोगे कि मैं प्रैक्टिकल सिर्फ पढ़ लूँगा, मैनुअल पढ़ लिया मेरा हो गया, इससे नहीं होगा। वहाँ पे स्टेप भी अगर लिखा होगा, वो जब तक आप अपने से नहीं करोगे सॉफ्टवेयर में वो नहीं रन होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, एक बार आपने रन कर लिया, नेक्स्ट टाइम आपको नोट्स खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। वंस आपको ऑप्शन एक बार आपके हाथ से गया, आपने किया, तो फिर आप यूज टू हो जाओगे, आपको फिर नोट्स का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको पास कोई भी प्रॉब्लम आएगा, यू योर सेल्फ विल हैंडल विदाउट एनी नोट्स, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाओगे इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, आप अच्छे से इसको एक बार देख लो। जैसे मैंने आपको बताया था एक लीजेंड वाला जो लेफ्ट साइड में मेरे सिस्टम में था, उसको भी आप एक्सप्लोर करना। और उसको आप वहाँ पे जो रेंडरिंग और ये पूछा था मुझे किसी ने, जैसे वहाँ पे आप अलग अलग बैंड्स को कंबाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास अलग अलग लेयर्स खुले हैं, ठीक है, 10 लेयर्स, आपने 10 लेयर मतलब 10 मैप्स आपके लेयर लीजेंड विंडो में आपको 10 दिख रहे हैं। तो मान लीजिए 10 में से 4 ऐसे हैं कि आपके काम के हैं, काम के मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हैं, ये चारों आपको एक साथ ही लगने हैं। ठीक है, तो जहाँ भी जानेंगे आपको काम करना है तो ये चारों का ज़रूरत पड़ता है। तो हर बार वो 4 में से कोई ना कोई लगना है, तो वो 4 का आप ग्रुप भी बना सकते हो। आप वो भी, अभी लेयर्स नहीं है इसलिए मैं आपको वो एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, तो वो चारों को आप ग्रुप भी कर सकते हैं। Someone's screen is shared. You want to show something? Um, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसमें इजी सॉफ्टवेयर है,
यूजर फ्रेंडली है, प्रैक्टिस मांगता है बस। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे इजी है। I think still few more students have joined. So those who joined, where to find the legend? Yeah, it's legend menu. It's hopefully at the left side of your window. You can see where uh, the title might be layers for you. ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको दिख ही नहीं रहा है ये मेनू, सुभाष? Sir, I'm able to see, sir. So can you put But I'm your not screen? able to see. I'm not able to see the legend, sir. Yeah. You just put on the screen. Share your screen. Yes, sir.
Are you able to see, sir? Yes, yes. Now it is coming. Yeah, it is there, na Subhash. It is there below layers. It is like last This. one. Yeah. Because see now we don't have any layers, any maps in our database because this is first exercise. Once we add some layer here, so automatically it will be coming here. Yes, sir. And in case if any of the other learners, if you are facing the problem, if it is not visible, what you have to do, you have to right click on the menu bar. Subhash, can you right click on the menu bar so that again everyone can see? Yes, sir. Just right click. Done, sir. No, it's not. You just on empty place, uh, second line on the top before this menu buttons. Here. Second line from the top of your screen. First one is very small. I cannot First one is read. title, sir. Second one is Yeah. menu Just bar. untitled project QGIS. Yes, Then sir. below that you have project edit. Yes, Okay. sir. View layers. Yes. Yeah, you click Main on menu this bar. right click on the menu at empty place where there is no button. Yes, sir. I'm clicking on here, and I'm finding this one. No, it is not. We cannot see your cursor. The panels, advanced digital. There different You have panels are there. you have help button. Yes, sir. I have help button. Yeah, you just click right click here after help. Right click after help, not on help. You just right click. Yes, sir. Some menu is coming. Yes, sir. Panels are there. Different panels are Oh, there, sir. okay. I think you have only shared this screen, this window, so that might be not showing here. You have to share the entire screen, then only we can see it. Okay, sir. I'm sharing. You share the entire screen for the benefit of all. Sir, I'm sharing. Are you able to see this? Yeah. Now it is your screen is visible. You go to the QGIS again, QGIS window. I'm already there, sir. No, I can see your Bluetooth and devices menu. I'm there on my QGI screen, sir. Mm, no, but we cannot see your QGIS window, Subhash. You have shared entire screen. Yes, sir. Share it again. Yes, sir. Again shared. Yeah, now it is coming. Yeah, you go to your QGIS window. Yes, Correct, sir. correct. Now Now I'm you going to. right click. Yes. Please, everyone, see if you think anything is you are not getting.
Okay, if any button, any menu, if anything you are not getting on your GUI, so don't blame software as well as don't blame me also. Okay, and don't blame yourself. So quickly you have to right click on the main menu and see whether it is there in the your list and is checked. Okay, if it is unchecked, you won't get there. Okay, just check it, everything you will get. Okay, if anything missing, you have to just right click and see whether it is in the list of checked in. If it is not checked, if it is unchecked, so you will not get. Once you check here, close this automatically, it will appear at its place, default place, until and unless you drag and put it to some other place. Okay, Okay, sir. fine. Now, Subhash, I think what we will do, you keep your screen shared. So we will see the plugin part right now, and you Yes, sir. can explore then rest of the things. We'll see the plugin part. You see, as I told morning, like for most of the operations, you require the plugin. So plugin you can install as well as if you don't want the plugin, you can uninstall also. So what you have to do now, you have to In menu bar, install we the have to go plugin. to plugins, sir. Yes, sir. Yes, you have to go to Then the manage plugin and and then manage and manage and install install plugin. Yeah, plugins. you click on this, please. Yes, sir. Yeah, Something is opening here, sir. please hold on this. See, this is your plugin menu. Uh, where is your this one? Yeah, it is there. If you see the extreme left, what you will get, there are 3 4 buttons here. uh, One first one is all. When you like Subhash now clicked on all, so whatever plugins available, you get a long laundry list. Okay, long laundry list आपको मिलेगा. ये आप कब यूज करना है, ये मैं बताता हूँ. आपको पता ही नहीं कि मुझे कौन सा प्लगइन यूज करना है. ठीक है, हमें किसी लोकेशन पे जाना है, लेकिन लोकेशन का नाम हमें पता नहीं है. हमें थोड़ा सराउंडिंग इधर-उधर का पता है, हल्का-सा आइडिया है. तो आपको कुछ एप्लीकेशन कुछ परफ़ॉर्म कुछ करना है, लेकिन आपको एग्ज़ैक्टली नाम पता नहीं है कि क्या करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है? तो ये अभी जो सुभाष ने ऑल पे क्लिक किया तो ये पूरा लिस्ट मिल गया। भई आप शॉप में गए मुझे कुछ चाहिए, तो शॉपकीपर ने बोला कि क्या चाहिए नाम बताओ। आपने बोला नाम पता नहीं, तो शॉपकीपर ने क्या किया, उसके पास जितना चीज़ें हैं आपको बोला कि ये मेरा लिस्ट है, आप इसमें से खोज के बताओ कि क्या क्या आपको चाहिए। होटल में बैठा तो आपको क्या चाहिए और होटल में क्या है, मेनू लिस्ट दे देता है। वैसा ये इसने एक आपको लिस्ट दे दिया, ऑल पे क्लिक किया तो इसमें आपको पूरे प्लगइन मिलेगा। अब इसमें से कौन से आपका काम का है और कौन से काम का नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए सुभाष किसी भी एक पे आप क्लिक करिए, एक प्लगइन पे, उसी में ऑल में किसी, हाँ बस। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं किसी भी एक जगह, एक इसमें, तो ये आपको बताएगा इसका क्या नाम है, ये किसने बनाया, क्या किया, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है हो सकता है आपके काम का इमीडिएट आपको नहीं लगेगा, लेकिन ये इसमें से एक इन्फॉर्मेशन ये पता आपको चलेगी कि ये क्या करता है, ये किस लिए यूज़ होता है, इसका यूज़ क्या है। तो ऐसे आप 1-2 पे क्लिक करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये किस काम का है, इससे क्या ऑपरेशन होगा। देखिए अभी इसमें इन्होंने जो क्लिक किया है, इसका है क्रिएट पॉइंट फीचर फ्रॉम यूजर एंटर कोऑर्डिनेट्स थ्रू अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस। मतलब इसका ये हुआ कि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एंड वाई लोकेशन मेरे पास है, कोऑर्डिनेट्स है, तो वो कोऑर्डिनेट्स मैं डालूंगा तो उससे पॉइंट लेयर बनाएगा। ये कितना सिंपल है,
अब वो कोऑर्डिनेट्स कैसे लेता है, हो सकता है कि एक साथ बैच लेगा पूरा या उसमें भी एक-एक डालना है, वो देखेंगे, बात की बात है। लेकिन इससे पता ये चला कि भैया मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, मुझे मैप बनाना है, कौन-सा प्लगइन यूज़ करूँ? प्लगइन का नाम पता नहीं है, तो लॉन्ड्री लिस्ट खोला ऑल का और उसमें से देखा, ठीक है? तो जो काम का प्लगइन मिला, उसको इंस्टॉल किया और यूज़ कर लिया। दूसरा है कि आपको हल्का-सा पता है, आपको पूरा नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि भैया मेरा प्लगइन जो यूज़ होना है, इसका नाम थोड़े से ये 2-3 लेटर से शुरू होता है। जैसे आपको वेक्टर रिलेटेड कुछ करना है, आपको पता है कि मुझे वेक्टर रिलेटेड काम करना है, तो आप ऊपर एक सुबह सर्च है, सर्च टॉप में एक वो दिखा, हाँ, इसमें आपको वेक्टर रिलेटेड कुछ करना है तो वी कुछ डाल दिया इन्होंने, सर्च कर दिया, इसको सर्च करिए, पूरा मत डालिए, आधा भी डालोगे तो वो, पूरा भी डालोगे तो करेगा, आधा भी डालोगे तो करेगा। तो कुछ पता है इन्होंने, कुछ उसको हिंट दिया, वेक्टर रिलेटेड खोजना है इनको, तो वो वेक्टर रिलेटेड प्लगइन आपको मिल जाएंगे, तो उसमें से आप खोजोगे। तो थोड़ा नैरो किया, पूरे लॉन्ड्री लिस्ट में से कुछ परसेंट हट गए, कुछ रह गए, तो ये आप ऑल और सर्च का भी इसमें यूज कर सकते। अब दूसरा इसके नीचे बटन है, आप इसको कर लेना बाद में आराम से, एक्सप्लोर में बता जस्ट रहा हूँ कि कहाँ पे क्या मिलेगा। इंस्टॉल पे जाइए, क्लिक करिए इंस्टॉल पे। अब इसमें क्या है ना, अभी आपने जैसे सुभाष ने अभी कोई इंस्टॉल नहीं किया है, ये जैसे 1-2 प्लगइन इंस्टॉल करेंगे इसमें, तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्लगइन आपने QGIS में इंस्टॉल किए हैं उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, वो लिस्ट आपको दिखेगा इंस्टॉल में, ठीक है? तो आपको यूज़ करना है, लेकिन हो सकता है आपको मेनू में नहीं दिख रहा है, इधर-उधर पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने किया तो था, लेकिन नहीं आ रहा है, तो गए मैनेज प्लगइन में टक से खोला, उसको इंस्टॉल में देखा है क्या इंस्टॉल, नहीं है, फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर दूसरा है नॉट इंस्टॉल्ड, ये सारे इतने प्लगइन्स हैं जो कि आपने इंस्टॉल नहीं किए, वो दिखेंगे। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो इस लिस्ट में हट जाएगा, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं सुभाष, आप अभी कोई भी एक प्लगइन ले लो, जस्ट हम एक डेमो करते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, कोई भी एक ले लेना। अब देखिए सब लोग एक प्लगइन इसमें सुभाष अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। We are selecting add point for a demo. For this plugin, we can do create point feature from user entered coordinates through a simplified interface. So now we can see in the bottom side there is an option install plugin. So we have to go here, sir. यस, करो करो इंस्टॉल करो, बहुत सिंपल है। देखिए छोटा प्लगइन होगा तो जल्दी होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो टाइम लेगा, और इस पे आपका इंटरनेट स्पीड भी मैटर करेगा। अगर आपका कनेक्टिविटी अच्छा है तो 2-3 सेकंड में कर देगा। अब एक बार आप फिर से, हो गया इंस्टॉल? Yes, sir. अब इंस्टॉल पे क्लिक करके दिखाइए कि कौन सा इंस्टॉल हुआ है। This one's add point action for relations, DB manager, Grass CIS processor provider. Here these are, sir. तो ये शायद आपने जो किया था, मैंने देखा नहीं कौन सा था ये, इसके साथ ये ग्रुप होगा, उसने अपने This साथ one, sir. बाकी भी Add चीजें, point. Yes, sir. Yes, sir. डिपेंडेंसी जो था उनको भी ऐड Add किया। point. Add point is there which we have done at this time, sir. यस, तो अब मुझे ये बताओ, अभी इसमें आप एक्सप्लोर कर लेना, बाद में हम उसको लिए टाइम भी रखेंगे। तो ये बताओ प्लगइन इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल कर दो यार, इसको एक बार अनइंस्टॉल भी देखते हैं। अब जस्ट अनइंस्टॉल दिस प्लगइन, नीचे उसी प्लगइन को आपने सिलेक्ट कर लिया और नीचे अनइंस्टॉल आता है, कर दो अनइंस्टॉल, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे जरूरत पड़ेगा तो। यस करो। तो Yes, ये sir. प्लगइन हमने इंस्टॉल किया सुभाष ने, और उसी को अनइंस्टॉल किया। जब जरूरत है आपने प्लगइन लिया, इंस्टॉल कर लिया, आपको लगा कि भैया ये
मेरा बहुत स्पेस ले रहा है या मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो हटा दो। 2 सेकंड लगेगा इंस्टॉल करने में, 2 सेकंड लगेगा हटाने में, ईज़ी है। आप इससे साथ थोड़ा-सा एक्सप्लोर करोगे तो और यूज़्ड टू हो जाओगे। तो आपको अगर कुछ भी पता नहीं है क्यूजीएस में, नाम भी नहीं याद आ रहा है, जस्ट थोड़ा-सा आइडिया क्या करना है या ऐसे करने से ये प्रोसेस मेरा डिज़ायरेबल आउटपुट देगा, इतना भी पता है, यू कैन गो टू द लॉन्ड्री लिस्ट, फाइंड आउट द राइट प्लगइन एंड डू द एप्लीकेशन। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसको आपको कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें, बहुत ईज़िली आप इसको हैंड इन हैंड मैनेज कर सकते हो। किसी को आपको पूछने का, हेल्प का भी ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन डू ऑन योरसेल्फ। ठीक है? तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट है किसी को प्लगइन में? डाउट तो तब आएगा ना सर जब हम करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अनशेयर कर सकते हैं सुभाष। तो जी अब सर। क्या करते हैं ना, जिसको भी और पहले का भी कुछ एक्सप्लोर करना है उसको आप एक्सप्लोर करिए। उसके बाद आपको अच्छे से रट्टा मारना है प्लगइन का, बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, इजीली आ जाएगा। एक बार आप अपने से कर लोगे ना इंस्टॉल, इजी है, आपको पता है कि प्लगइन मेनू में जाना है, इंस्टॉल करना है, और कैसे समझना है प्लगइन को, टेक्स्ट दिया रहता है उसका डिस्क्रिप्शन, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लगइन मेरा क्या काम का है, क्या काम करेगा। तो वो पता चला, आपको पता है कि एक्सपेक्टेड मेरा आउटपुट ये आना है, मैं ये ऑपरेशन करना चाहता हूँ, कौन सा प्लगइन यूज़ होगा, तो उससे आप कर सकते हो, बहुत हैंडी है, आप इसको कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। मे बी आई विल नॉट डिस्टर्ब यू इन बिटवीन, और किसी को दिक्कत आती है वो भी हम ऑन द स्पॉट अभी नहीं रिजॉल्व करते हैं, उसको आप छोड़ के आगे चलिए, एक्सप्लोर करिए। और उसके बाद हम लोग फिर एक बार रिव्यू करेंगे, कहीं किसी को कुछ दिक्कत है, क्या है, किसी का रन नहीं हो रहा है, तो उसको हम रन करेंगे स्क्रीन शेयर करके, एंड इस एक्सरसाइज को उसके बाद हम क्लोज करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ अभी बाद में भी लर्नर्स ज्वाइन हुए, तो जो लोग पहले ज्वाइन हुए थे, मेरे ख्याल से 15-16 लोग थे इनिशियली, तो उनका पूरा प्रोसेस डेफिनेटली कंप्लीट हुआ है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, अ, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर भी किया है, और अभी प्लगइन भी आप करोगे, तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन कुछ लर्नर्स इन बिटवीन भी ज्वाइन हुए, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ, तो उनको थोड़ा इंस्टॉल करना और उसके बाद एक्सप्लोर करना, फिर प्लगइन करने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो आज का दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा लंबा एक पॉज़ लेते हैं, मे बी 1 घंटे का अगर लेते हैं, अभी टाइम क्या हुआ है? इट्स अराउंड 12:30, 12:30, 1:30, अच्छा फिर तो लंच टाइम हो जाएगा। एक काम करते हैं फिर, आप एक्सप्लोर करो, ठीक है? जिनका हो जाता है दे कैन ब्रेक फॉर द लंच, एंड उसके बाद हम लोग इसको फिर वापस रीजॉइन करते हैं सेशन को, जो भी डाउट्स है डिस्कस करेंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। इज इट ओके? ओके ईशा, ओके। क्योंकि क्या है, अभी थोड़ा हम लोग आगे पीछे हैं, कुछ लोग बाद में, कुछ लोग पहले आए हैं, तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म में एक पेज पे आएंगे, एंड देन you can, maybe you can break early for the lunch, we can start session little early also. So it's 12:30. By doing this remaining part of the exercise, for the learners who joined late, will give some more flexibility for this today's session. From tomorrow onwards, uh, we all will be together, and will move together only. So what time you will come back? You complete this exercise and then you go to the lunch. Okay. Plugin part and exploration. So what time we start again, then join? Everyone should be there, because now someone will go early, someone will be still exploring. So we'll give little flexibility. So 1:45 is okay. Rejoining.
1 hour exploration and 45 minutes for lunch. Correct? So we will be joining at 1:45. Is it okay for everyone? Yeah. So you keep working and join back at 1:45. Okay then. Huh? So I will be off. You note down any question, any query. If something ये काम नहीं कर रहा है, मेरा सर वो काम नहीं कर रहा है, ये ऑपरेशन नहीं हो रहा है, या इसका मेनू मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, जो भी होगा, एवन सिली, मोस्ट ऑफ द सिली भी होगा, डोंट शाई, bring it here, we can discuss, and then we can start the another session. Okay, I will take pause and see you at 1:45. Okay then. Thank you, sir. Welcome. Okay, I can see some of the new faces again here. Okay, so morning we installed QGS. Am I audible? Hope yes. Yes, sir. Okay, okay, very good. So morning we installed QGS and we saw how to manage the plugins. Right? Any issue, any difficulty, अगर उसमें है तो let me know. If you are okay, fine, everyone is having software on their system, then we can start with the next exercise. If there is any issue, always we can discuss, let me know. I hope you are okay with the morning exercise. Now, there is one thing, those who were not there in the morning session, so please go through your exercise number 7, that is installation on QGIS. So you follow the steps and install the software. Okay, that you can do later on. So now we can start the another exercise, which is your exercise number 4, getting started with Google Earth. Okay, so please open the your practical notebook, and you can even you can directly use the link I have put in the chat also, or you can follow through your notes. Okay, so once you open this link, so it will take you to the Google Earth page here. Okay, and from here you will download Google Earth Pro. Okay, there are two things. One, you might be seeing this. I will open another page, Google Earth. uh, Not Google Earth, Google Maps. You might be using this Google Maps. Hope everyone is aware about this, right? This you are using.
for navigation or seeing the locations or many other purposes. So generally you are aware about the Google Maps, you are using this. So now what we are doing, we are downloading this another application. This is Google Earth. I'm not downloading, I'm just showing the uh, web page here because already I have on my system, so I will not download. Okay, you download this and install this Google Earth Pro. I don't think it will take much time. Maybe in 2 3 minutes you can install, and then we'll see the next steps in this exercise. Okay, so quickly you download and install. You can follow the steps in the practical note. Sir, I have a query regarding QGIS software. Are you able to download Google Earth Pro or still going on? Okay, so we'll download done. Okay, let me know once you complete the download. Uh, Sir, hello. Yes, yes. So how can we know the class timing? If you can answer that. Already the schedule was shared with everyone. Mm, Email. Yeah, email or maybe in your WhatsApp groups. Already it is shared. You have not received? No, I have just joined. Actually, didn't receive any kind of information from my study center. I have just got to know that we have a class. Just today, I joined at 10:30 a.m. I guess. हम्म। या मैंने भी देखा लोग आगे पीछे आज ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हमें भी बहुत स्लो स्पेस से चलना पड़ रहा है। हाँ क्योंकि इन बिटवीन आओगे तो फिर वो कैच नहीं कर पाएंगे कि पहले क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है। बट हाँ सर यू अगर टॉक। क्लास हाँ Hello, sir. हाँ Sorry to disturb, sir. हाँ Just sir, during our practical classes, in our practical book, there are some certain assignments. Like for today's first session, which was about installing of QGIS, there are certain assignments which are given that we have to share our screenshot of that QGIS to our counselor, and there is one more question is given. So where we have to share that, sir? मुझे लगता है आज का जो सुबह का एक्सरसाइज था उसमें आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना था इंस्टॉलेशन ऑफ Yes, QGIS sir. का। And major functions of the QGIS menu. These are the two questions which we have to do, sir. Sir, where do we have to share that? नो नीड टू शेयर टू विथ मी, क्योंकि हम लोग अभी इतना रिगरसली उसको कर रहे हैं कि पूरा हमने अच्छे से टाइम दिया। Yes, sir. बट प्रोवाइडेड इफ एनीवन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो उसको हम रिजॉल्व भी कर रहे हैं वहीं पे। तो
मुझे जरूरत नहीं exercise। अगर चाहिए तो मैं वैसे आपको बताऊंगा, Okay, पहले sir. एक्सरसाइज का तो जरूरत नहीं है। Okay. Okay. And at the end, sir, we have to अक्षयदीप, submit the आप whole अपने practical. रिस्पेक्टिव सेंटर से बात करिए, क्योंकि जो जितना भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं मैं शायद इसमें आपको नहीं हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, सुभाष कुछ बोल रहे थे आप? Yes, sir. I was discussing about our practical file of this MGYL104 course. We have to submit the whole file together, sir, after binding. No, that also you discuss with the respective. Okay, sir. Okay. Sorry You to mean disturb. आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. हमारी जो practical file बनती है उसका पूछ रहा था। हाँ, वो सेंटर से आप बात करिए, हो सकता है देयर विल बी सम मार्किंग एंड ऑल फॉर दैट। Actually, the thing वो is बात that, sir, from RC Delhi 3, no responses we are getting from there, sir. A lot of students in this session are from RC Delhi 3, and sir, we are not getting any response by mail, by call, anywhere. So we are just attending the session so that we can learn something at least. ओके, सो यू इधर इग्नू से या अपने रिस्पेक्टिव सेंटर से, क्योंकि मैं उसमें नहीं हेल्प कर पाऊंगा। जी सर, तो और जहाँ तक ये एक्सरसाइजेस की जो बात है, तो मैं ये इंश्योर करके चलता हूँ कि जब तक आपको नहीं आएगा पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम आगे नहीं बढ़ते। ये मैं एवरी टाइम आई फॉलो दिस प्रैक्टिस। सो जितने भी डाउट्स है आप पूछिए, वहीं पे क्लियर करेंगे फिर ही आगे चलेंगे। जी और सर, मोस्टली जो डेमोज रहेंगे उससे वो भी हम स्टूडेंट से ही करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि आपको जो डिफिकल्टी फेस हो रही है हो सकता है सिमिलर डिफिकल्टी बाकी पुलिस को भी हो रही होगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओनली सिलेक्टेड डेमो मैं यहाँ से दूंगा, रेस्ट आप ही लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके सीखेंगे। yes sir. ओके सुनील, यू आर शेयरिंग इंस्टॉल एंड ओके रन स्मूथली। ओके डन। सो इंस्टॉलेशन हुआ सबका? Sir, I have a query हाँ regarding कुलदीप। QJS software. हाँ हाँ। Actually, I missed morning session. I want to know, sir, which version is best for Mac OS, because I have installed I've tried many 3.44, 4.0, and other available source software, but there is one issue. No one, neither is supported SCP plugin. So which ओके one is to, you know, which one is compatible for all exercises? सी दे विंडोज के लिए उन्होंने अलग दिया है, लिनक्स के लिए अलग, मैक के लिए अलग दिया है, राइट? बट मैक के लिए जो दिया है सर वो भी एससीपी वाला प्लगइन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली मैं भी विंडोज़ का ही यूज़र हूँ। मैक्सिमम विंडोज़ में मेरा भी एप्लीकेशंस और ये चलता है। लिनक्स मैक में उतना मेरा काम नहीं पड़ता है मुझे। सर सर ये और लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा सर अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाए तो, मतलब। कितने लोग मैक में काम कर रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ पे जो है हमारे बैच में और भी कोई कर रहा है क्या? और लिनक्स, हाँ ओके दीपक, उबंटू इज बेटर यू आर सेइंग फॉर लिनक्स। आई थिंक मैक में शायद मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें मेरा ज़्यादा विंडोज़ पे ही है। लिनक्स और मैक को कोई नीड बेस होता है तभी यूज़ होता है, अदरवाइज नहीं। ओके सर, फाइन, जस्ट वांटेड टू नो। यस, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो गूगल अर्थ सब पे इंस्टॉल हो रहा है या किसी का कोई इशू है बताओ, ताकि थोड़ा सा उसको मैं बड़ा क्विक देखना चाहता हूँ, फिर आगे चलेंगे। एवरीवन इज डन विद गूगल अर्थ इंस्टॉलेशन और स्टिल यू वांट सम टाइम?
Nazreen, I think I may not be able to answer your question regarding counselor for evaluation. Maybe your center can help. ओके कितने मेरे ख्याल से 4-5 लोगों का इंस्टॉलेशन हुआ है. व्हाट अबाउट अदर्स स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज आई डोंट नो योर इंटरनेट स्पीड्स. ओके डन. Okay, will those who have Google Earth installed, okay, those who have installed the Google Earth, so you can just explore it. Already installed, done. Okay, so what I will do, I will just share my screen and so you might be getting the screen like this. My screen, hope it is visible. Okay, there Yes, is sir. some Visible. yeah, some error is showing. I will close this. So you will get this earth on your screen. Now this is very basic exercise. ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है. अगर आप में से किसी ने इसको पहले देखा होगा गूगल अर्थ पे या थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया होगा तो आपके लिए शायद थोड़ा बोरिंग भी लगे, बट इट्स पार्ट ऑफ आवर सिलेबस बिकॉज इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं. लेकिन जब तक बेसिक हमें पता नहीं होगा तो हम इसको आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे. ठीक है. बेसिकली दिस इज अर्थ, यू कैन मूव इट. ओके, so you can change the north direction from here. You can just move this needle and you can change. सिमिलरली मॉर्निंग में जो हमने देखा था इसके मेन फंक्शनैलिटीज हमें थोड़े से एक्सप्लोर करने हैं. जैसे मॉर्निंग में हमने देखा था कि टाइटल बार, मेन मेनू, मैप व्यू, स्केल्स एंड ऑल, सो डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स. तो बेसिक जो चाहिए मिनिमम ऑपरेशन के लिए वो था. तो इसमें भी सेम है. ठीक है. तो इसमें आपको क्या क्या एक्सप्लोर करना है बिना मैं नाम उसके लिए आपको जस्ट बताता हूँ. हालांकि आपके जो प्रैक्टिकल नोट्स है उसमें है, सब लिखा हुआ भी है. तो आपको बेसिकली ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना मेरा कर्सर, फाइल, एडिट, व्यू, ठीक है, ये मेनू इसको आपको देखना है. उसके बाद मैं जस्ट आपको प्लेसेस देख बता रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पे एक सर्च देखना है, इसको आपको एक्सप्लोर करना है. आपके नोट्स में लिखा होगा सर्च विल बी यूज टू फॉर एग्जांपल सर्च द पर्टिकुलर लोकेशन और समथिंग लाइक दैट इट हैज रिटन. सो आपको वो नोट्स देखना है और इसमें लिखना है. जैसे मैंने समथिंग आई विल राइट, मैंने इसमें न्यू दिल्ली लिखा. सो इट इज गोइंग टू न्यू दिल्ली लोकेशन. ओके, यहाँ पे तो आपको इसको ऐसे इस वे में एक्सप्लोर करना है. तो देन अनदर हियर यू हैव गेट डायरेक्शन आल्सो. फिर यहाँ पे यू हैव प्लेसेस मेनू, इसको भी एक्सप्लोर करना है. You got my point. So there are few things, 6-7 items given in your practical notes. So you try it. Morning I told you should know where it is and how it is working. Now I am saying you directly try it and see what is its utility. You put example like search, we put, you use other this one and explore. So we'll keep little time buffer because I hope still some of you are in the installation phase, or installation is completed for everyone. Can you confirm any installation is done? Okay, Neeraj.
I hope most of you are done with installation. Anyone is facing any problem in installation? No. Okay. Then straight away you explore. You have notes. You can see in your this exercise. See here 6 7 items they have given this exercise. You just find it where it is, like search panel we have seen the example. You can see the places panel, toolbar buttons, navigation, 3D viewer. All you just explore it. It's a long list, huh? It's long list. You have to explore. On maybe what we will do, each one can give demo of 2. Let us do like this. I will stop sharing my screen. You explore any 2 functions or menus, 2 or 3 max, and once you are satisfied it's working, you just give the demo to the rest of the students. So each one can give the demo of 333, any 3. Is it okay? Okay, Sunil. ठीक है. So anyone of you is a simple software even, but we need to get used to it. That's why once you done with 2 or 3 functionalities, you just share your screen and give the demo. What we will do, rest of the students they will take the new one and give the demo. Okay. So once anyone is ready, you can share the screen and give the demo. So who will project the screen first? Yes, Aditya. No problem. You can show any 2 option of your choice, or I will suggest better we'll go from top to bottom one by one because there are many options. Yeah, you can share your screen. Oh, my voice was breaking. Okay, okay, okay. So what I was saying, Deepak, just hold on, एक minute. What I was saying, there are different options. Morning we spent some time on QGIS to know broadly the software. Okay, different menus and all different functions. Here also we'll do the same thing, but in different way. We'll explore its functionalities one by one. The list is given in your lab manual. Everyone is having lab manual, or someone is there that he is not having this exercise, otherwise you won't be. No sir. Okay, Shruti is saying yes. No sir. Okay, some of you don't have this manual with you. Oh, oh, oh. No lab manual, then it will be difficult. Okay, you get your lab notes from the respective centers. Maybe for this exercise, otherwise I will, how I will share. Okay, I will put this in some drive then.
Was here, I don't think it is. Just hold on, I will share. Later on, you get from your respective centers. Google Drive. Let me. Just give me 1 minute. I'll create one folder and I'll share there. No exercises. Those who are not having manual, I am sharing Google link. Let it be uploaded. Sir, am I audible? Yes, yes. I wanted to ask a question. Like, we have to share our screen for Google Earth Pro and tell the features, like one to two features of Google Earth. Is it Yes, yes, yes. Any two functionalities you will project, and then okay? you will explain to your colleagues. Okay, sir, can I share my So screen? just a minute, because uh, just hold for a minute. Okay. We share. Anyone with link over? I have shared this folder. Just confirm whether the it is working or not. There will be exercise 4 and exercise 5 also, as well as exercise 7, which in the morning we saw. Exercise 4 we are doing right now. Can anyone confirm it is giving access to download? Yes, sir, it is accessible. Okay, okay. Yeah, now you can share the screen, and you can uh, teach us any 2 points, any two features which you want. Okay, sir. And rest Let of me the share. students, you can also ask cross questions and all. So in this way, we'll interact and we'll learn also. Okay. Is You my have to click screen on visible, speaking sir? also. Yes, yes, screen is visible. Okay. So with Google Earth, we can explore many more things. For starting from the basics, like here are the some tools and buttons are given for zoom in the map, like Google Earth. We can zoom here, from here, zoom out from here. There are like left and align for the alignment of north arrow, and there is a panel given for left and right movement.
and by touching any on the map on any point, we can get the latitudinal and longitudinal details here. And first, if you want to search any place, for suppose in India. एक minute. Okay, Any two functionalities in detail okay, you have to explain. Any two, okay. not all. Okay, sir. We can search any place on the earth by typing here. For let's suppose I'm from Varanasi, so I will be typing Varanasi here, and it is going zooming in to the city Varanasi. And here, if we want to uh, click mark down a place for like here it is a Pandepur city, or here is the Banaras Hindu University campus. We can like using this tool, we can mark this by shifting this tool. We can add the area like uh, Banaras Hindu University. Hindu University. And here we can see the details of the latitude and longitude of the university campus. And by clicking OK, we in the places section, we have the shortcut like no need to search again by typing. We directly we can search here by like I have searched many places like Kanpur, Kalan, many places like this. This is the area, like by using this shortcut, we can directly without typing the name of the city or the name of area, we can go to the by exact scale or zoom in of that area. Is it okay, sir? We can also is here scale given, history is given, like for I was talking about Varanasi. This is the satellite map. We can see here the day, month and year. We can also change it by going selecting before dates or any date we want to go and see at that time what how the city was looking. For the it is good for the spatio-temporal analysis. Thank you. Okay, thank you, Nazreen. So now she gave the demo like how to add place, okay, and how to quickly find the added place. You need not to go to the search bar and type. You just double click it. It is taking you to that place. Okay, fine. Another thing, what she told is you the navigation. Okay, two things she told us, and the third history will come back again. So basically these two things you can do on yourself quickly and see is it working for you or not. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Can I stop sharing my screen? Yes, please. Okay, thank you so So much. next any 2 points, anyone is ready, you can project your screen and you can explain us, you can teach us. Sir, can I proceed with sharing my screen? Yes, Shruti, you have to tell which points, functionalities you are going to explain and then demonstrate. Okay, sir.
Is it visible? Yeah, your screen is visible. So, previously she told like how we can find the places. So now, as you can see, I've marked quite many places. So I'll take this place for example. So now, as you can see, I've made a folder here. This is a place that this is an industry which has been found in the year 2004. So for doing this, what we can do is you right click on this temporary places, and then you can add, and you can add a folder. So now if I name this folder new place for example, so a new folder has been created. Now I stay in Shillong, so I will search my place. Suppose this place has come. So now I will put a place mark here. So now when I have put this place mark, it has been saved under this folder. Now if I add more places under Shillong, and then if I want them all in the same place, all I have to do is I can just export this folder such as save to my places is there, save place as. So then it will open a new place. Now there are two folder types in which we can save our Google Earth points. One is KML and one is KMZ. So we mainly use KML files. Here we will write new place Shillong. So now this will be saved, and we can open this point in QGIS, and we can mark this area. Like this place will come as a point, and we can digitize it or use it for temporary like specialization or whichever need we have. That's also. Thank you, Shruti. So now what she told, how to create the folder, how to save your place in a folder. This is one part. Another important part, which is below in your exercise towards the end, that work here in in Google Earth, mark your place, road, polygon, whatever you want, and then you take it to the QGIS. You can export in KML and KMZ files, and you can work in QGIS. Thank you. But you do on yourself. Huh? Exporting part we'll see, or some of you can demonstrate on how to export. It is coming there towards the end of your exercise. Yeah, if when someone is ready, please project and explain us 2 points. सर नमस्ते. नमस्कार. सर मैं गूगल अर्थ में दिखा सकता हूँ सर. अरे बिल्कुल बिल्कुल, 2 पॉइंट्स, 2 फंक्शनलिटी जो भी आपको करना एक्सप्लेन करेंगे उस वो बताइए और एक्सप्लेन करिए. And rest of the learner, you can ask the question. If you are not, you have some doubt or you have some other view, you can discuss. Sir, only for Google Earth or QGIS? No. For this exercise, you have to explain any 2 functionalities which you did. Okay? सर इन गूगल अर्थ ओनली या QGIS में भी दिखा सकते हैं सर, दोनों में? No. Right now,
No. Right now, we'll focus only on this present exercise number 4, which is on यस, Google Earth. Yes. तो मैं शेयर करूँ सर मेरा स्क्रीन? हाँ, आप शेयर करिए जो भी आपके दो फंक्शनैलिटीज है, you can showcase it, and rest of the students can watch. If they have any doubt, any suggestion, they can put forth. Yes, your screen is visible. यस सर। तो यहाँ पे हम जैसे प्रीवियसली बताएं कि पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे हम कोई वाटर बॉडी या कोई ऐसी पिक्चर को मार्क करना चाह रहे हैं, आज एक पॉलीगन बनाना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम बना पाएंगे इसमें पॉलीगन। तो यहाँ पे एक टूल्स है, उसको बोलते हैं आर्ट पॉलीगन। तो यहाँ पे आर्ट पॉलीगन लेके हम यहाँ पे ड्रॉ कर पाएंगे जैसे पॉलीगन। And after complete the polygon, then click on OK to add a temporary file as a temporary file. अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं KML में, तो उसी लेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करके सेव प्लेस आज करके यहाँ पे आप KMZ और KML फाइल में सेव कर पाएंगे। ये था पॉलीगन बनाने के लिए। और दूसरा ऑप्शन है कि है लाइन बनाने के लिए, कोई रोड या कोई रिवर को हम मार्क करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप आर्ट लाइन करके भी बना पाएंगे। जैसे इसके लिए आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा आर्ट पाथ, जिन कोई भी रोड के ऊपर आप इससे बनाने के बाद फिर आप ओके करेंगे, तो ये आज लाइन टेम्पररी लेयर में सेव होगा। और इसी को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके उसी लेयर के ऊपर सेव आज करके उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो ये दो ऑप्शन था मैं दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये दो ऑप्शन आप लोग भी ट्राई करिए। Anyone for any other functionality? चलिए, आप लोगों का नहीं आ रहा है पॉइंट, तो मैं थोड़ा तब तक आप लोग एक्सप्लोर कर रहे। कोई भी दो सिटी लीजिए, नॉट नेसेसरी सिटी, कोई भी दो प्लेसेस लीजिए नियर बाय, या कोई दो ऑब्जेक्ट लीजिए और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है आप बताइए मेजर करके। ठीक है, जिसका भी होगा ही कैन प्रोजेक्ट द स्क्रीन एंड गिव द डेमो। क्वेश्चन समझ गए ना? कोई भी दो पॉइंट लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, दो शहर लीजिए, दो गांव लीजिए, दो वाटर बॉडी लीजिए, जो भी आपका मर्जी आप सिलेक्ट करिए दो, और दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है वो आपको बताना है यूजिंग गूगल अर्थ। जिसका भी मिलेगा ऑप्शन, he can share the screen and he can give the demo. Sir, hello sir. Good afternoon. Good afternoon, Kaushik. Sir, can I share my screen? For the distance between these two points? Distance between two places, yes sir. Yes. You share the screen and you have to explain how you did it, because hopefully you quickly did it.
Someone might be seeing Google Earth first time, so he will require some time. So you have to explain what option you have taken, how you measured, how you set the unit, distance, kilometer, whatever you did. So you have to explain step by step. Okay? Okay, sir. Okay. Yes. Project your screen. Hello, sir. Sir, screen is visible, sir. Yes, yes, yes. Visible. You go ahead. सर यहाँ पर एक टूल है जिसको शो रूलर ऑप्शन है एक गूगल अर्थ में, तो शो रूलर ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइन, पाथ, पॉलीगॉन, सर्कल, 3D पाथ, 3D पॉलीगॉन, ये सारे ऑप्शन है। इसमें हम लाइन लेके और पाथ जो भी चाहता हूँ मैं, अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं लाइन ले सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ पर जो भी यूनिट में मेजर करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर अगर मैं किलोमीटर सेट करता हूँ तो फिर ये जो दुर्गापुर है, हम देख सकते हैं दुर्गापुर यहाँ पर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है धानबाद। ये दुर्गापुर से धानबाद का डिस्टेंस अगर हम मेजर कर सकते हैं, जस्ट क्लिकिंग इन इट एंड क्लिकिंग द पॉइंट, तो यहाँ पर दिख रहा है 95.50 किलोमीटर। तो ऐसे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं सर। सर दिस इज ऑल। सॉरी, मेरा माइक्रोफोन ऑफ था। मैं ये बोल रहा था, आपके हाँ, इसमें रूलर विंडो नहीं आया? यहाँ पर सर ये जो रूलर है, ये रूलर विंडो नहीं, कहा रूलर विंडो कहाँ खुल रहा है आपका? ये जो दिख रहा है सर, एक मिनट सर, एक मिनट। Ruler window should come, na? I will show you what I want to explore. Like, let me. By the time, what I was expecting. Hope screen is visible. See. Yes, sir. Screen is visible, sir. Yeah. See this. He was suggesting to use this रूलर ओके। स्केल जो होता है ना मेजर करने का, सेम ये स्केल है, रूलर है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ रहा है सर। मैं समझ गया सर, मैं देखा था हूँ सर। हाँ हाँ। एक्चुअली मैं इंटायर स्क्रीन शेयर ना करके मैं सिर्फ गूगल अर्थ का वो शेयर किया। ओके ओके ओके, दैट्स व्हाई, बिकॉज़ वी हैव नॉट सीन दिस। सो यहाँ पे ये जो आपने रूलर पे गए, उसके बाद ये रूलर विंडो खुलेगा। इस विंडो में आपको ऑप्शन ये रहेगा, वेदर यू वांट टू मेजर लाइन और यू वांट टू मेजर पाथ, यू वांट टू मेजर पॉलीगॉन, सर्कल। सो there are few options. So whatever requirement is there, you can select one. For example, I want to do the line, and here you can change the unit. Right now by default it is, I will change this into the miles, or I will change to the kilometer. Okay, so then I can select what is this. Is a merit. I have clicked it and I will go to the new data. Okay, so it shows me 3.82 kilometers. Okay. So you type the option and please share your entire screen so that we can see each and every step. Okay, once you are ready with another one, it is not visible. Shruti,
वॉइस ब्रेक हो रहा है. ओके, जस्ट मिनट, Good लेट afternoon, मी. sir. गुड आफ्टरनून. सर, आई हैव अ डाउट सर. फॉर हाँ एग्जांपल हाँ, सर, अगर मेरे को कोई कर्व सरफेस का मेजर करना हो डिस्टेंस सर, जैसे कि यस कोई यू कैन. पाथवे हो, तो सर हो या जाएगा यू सब कैन सेम? डू. ये बिल्कुल हो जाएगा. आप बताइए, मैं यहाँ पे. अच्छा, मेरा ये हट गया. शेयर स्क्रीन है. आप जितना चाहे कर सर्वे सरफेस का, जितना जिगजैग, जो ये तो मजा है जीआईएस का. अब आपको बहुत जिगजैग करना है ना. कोई बहुत जिगजैग फीचर लेते हैं. यहाँ पे कुछ जिगजैग बेनिफिट आपको बताता हूँ. ये जिगजैग फीचर है इसमें. टू द एक्सटेंट, जितना एक्सटेंट में चाहिए आप जूम कर सकते हो. करेक्ट. और जैसे आपने जूम कर लिया, नो प्रॉब्लम इसमें. अब इसमें क्या होता है, अभी फीचर नहीं दे रहा हूँ मैं, just आपको ये फिर से मैंने लिया. लाइन पाथ जो भी लेना है, लाइन ले लो. Sir, screen is फीचर not मेजर कर. visible. क्या स्क्रीन इज नॉट विजिबल? आ गई सर. फॉर अदर्स इज इट विजिबल और फॉर एवरीवन इज नॉट विजिबल? It's visible. नाउ सर इज अब विजिबल. आ गई है. Visible now, sir. ओके. सो आप बोल रहे हैं कि बहुत फीचर होगा, तो हम इसको कैसे मैप करेंगे, कैसे इसको मेजर करेंगे? इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ये पहले किया यहाँ पे, और यहाँ से दूसरा क्लिक करूंगा तो इट विल थोड़ा clear हो रही है. Or your voice is breaking. Screen isn't visible. just a minute. The network issue or what? Which minute? Just give me a second. I will just correct it. Yeah, hopefully now there will not be network disturbance. Okay. So मैं आपको ये बोल रहा था कि ये सेगमेंट बाय सेगमेंट, ये हर एक सेगमेंट का आप जो दो क्लिक कर रहे हैं ना, हर एक इसका डिस्टेंस आपको मिलेगा इसमें. और फीचर आपके जितने शार्प होंगे, आई मीन जिगजैग होंगे, तो उतने यू कैन इंक्रीज योर नंबर ऑफ क्लिक्स. तो उसको एग्जैक्टली भी आप ले सकते हो. तो कर्वेचर, आपने मुझे कर्वेचर पूछा है. मैंने कर्वेचर के 2 स्टेप आगे गया, और कर्वेचर ने हमारे एकदम शार्प एजेस वाले भी डिस्टेंस, और ये हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. या नाउ वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग ना? No, sir. It's audible. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. चलो. सो this ruler function is clear, but you try on your own also. Okay, then only you will get its feel, otherwise not. Okay, I will stop here. Now you can explore few more, and once you are ready, you can project your screen.
Jaydev, you want rural function to explain one more time? बोलिए राठौड़ साहब, और एक बार करे, इसको एक्सप्लेन करूं मैं? मे बी देर वॉज यस एंड हाउ टू डू मैपिंग। ओके, वो मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का डिस्टरबेंस भी आ रहा था बीच में, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और, ये सिंपल फंक्शन है वैसे, ज़्यादा इसमें टेंशन वाला चीज़ नहीं है। लेट मी शेयर इट अगेन। देखिए, इसमें आपको सीधा रूरल पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक रूरल का एक डायलॉग बॉक्स, एक छोटा सा विंडो खुला। इस छोटे से विंडो में आपको जो भी करना है, जैसे मुझे किसी एरिया का मेजर करना है, एरिया मेजर करना है मतलब पॉलीगॉन में ले लिया मैंने, उस पॉलीगॉन का मुझे एरिया देखना है। एरिया मुझे देखना है से मान लीजिए हेक्टर में देखना है मुझे, मैंने हेक्टर सिलेक्ट किया। अब इस पे आते हैं तो हम एक फीचर सिलेक्ट कर लेंगे, ये मैं लेता हूँ वाटर बॉडी। अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, देखिए ये आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक इसमें एक्सपर्टीज बनी जाएगी। जैसे मैं क्लिक करता तो हो सकता है मेरा पॉइंट वहाँ ऐड होता, लेकिन मैंने इसको ड्रैग किया है, ठीक है, तो ये आप भी प्रैक्टिस से करोगे। अब ये वाटर बॉडी का मैं बहुत अच्छे से इसको मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, जस्ट एरिया इसका हमें कैलकुलेट करना है, और वो चाहिए हेक्टर में। पहले हमने देखा था, हमने पाथ एक बार किया, एक बार लेंथ किया, अभी हम एरिया करते हैं। देखिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और यहीं पे मैं एंड करूँगा। पहला क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैंने दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ में एग्जैक्ट शेप नहीं करूँगा टू सेव द टाइम, थोड़ा सा मैं ऐसे ब्रॉडली इसको कर रहा हूँ। मे बी आप इसको करने जाओगे तो आपके इसमें कलर फील आएगा, मे बी मेरा सेटिंग कुछ अलग है, मैंने शायद किया है। तो ये सारा आपका अगर कलर आता है तो हॉलो भी कर सकते हैं इसको। तो ये मेरा एरिया बन गया है, ये आ रहा है अराउंड 352.94 हेक्टर आ रहा है, ठीक है। अभी भी इसको मैंने क्लोज नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि एडिटिंग में आपने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, तो आप राइट क्लिक करिए। ये देखिए मैंने एक बार किया था, मैं दूसरी बार राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये राइट क्लिक हो गया। ये मेरी बाउंड्री ठीक से नहीं जा रही थी, तो मैं इसको ऐसे फिर से रिवाइज कर सकता हूँ, इसको रिफाइन भी कर सकते हो आप, और एग्जैक्ट एरिया हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रूरल फिशर है। सर यहाँ पर वो जो 3D पाथ है और 3D पॉलीगॉन है, इसका क्या काम है सर? रूलर फंक्शन में जो 3D पाथ और 3D पॉलीगॉन जो दो ऑप्शन है, चलिए इसको देखिए, ये शायद हम इसमें नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली बेसिकली हाइट के लिए, जेड फंक्शन इसमें आता है, जेड मीन्स हाइट। अच्छा, उसके लिए है, मेजर करने के लिए। सिमिलरली कोई बिल्डिंग जैसे होता है ना, मान लीजिए हाँ, भुज खलीफा को आप मैप करने गए, उसका ही आपको हाइट मेजर करना है, तो वो आपको जेड भी मिलेगा। अभी आपको अच्छा, एक्स एंड वाई, लेंथ एंड विड्थ के बेसिस पे आप कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई के बेसिस पे, तो उसमें ऊंचाई का जो जेड होता है वो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एक फंक्शन हो गया रूरल नाम से, एक छोटा सा बटन है, बड़ी काम का है। चलिए मैं अनशेयर कर रहा हूँ, अभी आप एक्सप्लोर करिए उसमें, और जितने भी फंक्शन है, और कोई फंक्शन आपसे, अभी एक चीज हम इसमें कर रहे हैं कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो भी आपसे
एक्सप्लोर हुआ है, आप लोग उसको स्क्रीन शेयर करके सबके साथ शेयर कर रहे हो। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि भैया मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, तो नहीं होने वाली चीज भी बताइए जहाँ पे आपका स्टकअप हो रहा है, या आपको आपके प्रैक्टिकल बुक में तो नोटबुक में तो लिखा है, प्रैक्टिकल नोट में लिखा है करने के लिए, लेकिन आपका नहीं हो रहा है, तो वो भी होगा तो उसको भी आप शेयर करिए कि ये मेरा नहीं हो रहा है, तो उसको देखते हैं फिर जिसका हुआ है वो शेयर करेंगे या उसको हम देखेंगे कैसे करना है। तो और कोई फंक्शन जिसका होता है बताइए, तब तक मैं पॉज कर रहा हूँ खुद को। Yes, Ayan. Are you saying something? Someone was saying something. Good afternoon, sir. Sir, I have also another Good doubt, sir. afternoon. सर Yes. सर अगर मेरे को जैसे प्री एग्जिस्टिंग पॉइंट्स के लिए मेजर करना हो, एग्जाम्पल मतलब सर मैंने एक फोल्डर में पॉइंट्स पहले सेव करके रख लिए हैं जीपीएस कोऑर्डिनेट से, और फिर मेरे को आके मेजर करना हो सर, तो कैसे होगा सर फिर वो? देखिए, अगर आप उसको जीआईएस में लेके जाते हो तो बहुत आसानी से आपको वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन Yes, फॉर sir. दिस सेक ऑफ एक्सरसाइज हियर आप उस पॉइंट को इसमें तो डाल रहे हो ना गूगल मैप में। यस सर, वो ईएमएल में कन्वर्ट करिए सर। हाँ, तो गूगल मैप में तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो। तो सर हालांकि रूलर में जीआईएस में, जाके, यस सर, हाँ इसमें आप लोड करोगे वो पॉइंट ना, यस सर, जैसे पॉइंट आ गया, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग फीचर्स ले रहे हैं उसमें, तो सेम अगर ये आपके दो पॉइंट्स है तो आपको रूरल में जाना है और डिस्टेंस मेजर करना है। यहाँ पे आप जाइए रूरल में। यस सर। हाँ, लीजिए रूरल नहीं, रूरल में क्लिक करिए। ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ पे आया आपका रूरल मेनू आया। मुझे दिख नहीं रहा है आपका रूरल मेनू आया क्या नहीं आया। नहीं आया शायद। आपने रूरल पे क्लिक किया है? Yes, yes, I have. तो आपने शायद एंटायर स्क्रीन में ही शेयर किया है क्या? आपका स्क्रीन अनशेयर हुआ, एंटायर स्क्रीन शेयर करिए।
Yes. Select the first option. See the unit, which unit you want. Kilometer, meter, feet, whatever you want, you keep. Now you can click on the first point. It is adding distance with every segment. See, this is first option is line. Huh? If you want to calculate the area, then you have to go to polygon. You select polygon then. If you want to map the area, you have to select polygon feature. Now you can map. Make a complete circle. Is it showing the area and perimeter? आ गया ना दोनों भी, एरिया एंड पेरीमीटर? ठीक है, सब लोग करिए और बाकी बचे हुए ऑप्शन को भी ट्राई करते हैं, और कुछ नहीं बन रहा है उसको भी ट्राई करेंगे. सो आई विल गिव यू मे बी 5 मिनट का टाइम देते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा उसमें भी फोकस कर लो, और उसके बाद फिर डेमो करते हैं. ठीक है? बाय दैट टाइम अगर कोई और नए पॉइंट्स जो आपके नोट्स में है, कवर नहीं हुए, उसको भी लाइए यहाँ पे, और उसको भी हम लोग प्रोजेक्ट करके डिस्कस करेंगे. Yes or no? सर यस. सर अगर किसी ओवल शेप का एरिया लेना हो या हाफ सर्कल का एरिया लेना हो, तो क्या पाथ में ही जाकर के लेना होगा? नहीं, any area you have to take using polygon only. Polygon feature से you can take it. ओके, मैं छोटा ओवल का लेना. हाँ, आप जूम करके कर सकते हो. You can zoom to the maximum and then you can do so that you can accurately capture the area. ओके.
सर एक इमेज ओवरले का ऑप्शन है, उसको थोड़ा सा बताएं। यस, अभी आते हैं इसमें वन बाय वन। मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप लोगों ने किया ही होगा। उसमें जो छूटता है या जो नहीं हो रहा है तो देखते हैं, वन बाय वन चलते हैं। तो ये बताइए कि उसमें एक साइड बार होता है, तो डू यू नो वेयर इज द साइड बार? दिख रहा है साइड बार? लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन बार हैं, डिटेल्स हैं। तो उसको हाइड करना है, कैसे करेंगे? टॉप लेफ्ट में ऑप्शन है सर, हाइड साइड बार। यस, तो वो अगर नहीं चाहिए होगा तो करके देखिए, लेकिन एक बार बाकी लोग भी। सो हाउ टू हाइड साइड बार, हो रहा है? कंफर्म करिए होता है हाइड। कहाँ सर? चलो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। होप माय स्क्रीन इज विजिबल। या ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड साइड बार। ओके, ये अगर किसी के इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हो सकता है यू हैव टू क्लिक हियर, hide sidebar. So now my sidebar is hidden. Again, if I want, I can add from here. So this is the sidebar. Okay. Similarly, now what I want you, if anything is missing or which is there in your notes and also here, so if it is not working, anything is like that, you can discuss it here. So you have to try all these features and understand what it is doing. Okay. So all are done. Are you able to send your this image view via email? आपने देखा करके? जाता है, ये ईमेल से जा सकता है? So email is working for you? ट्राई करके देखो।
सर उसको ईमेल से सेंड करने के लिए वो आउटलुक का अकाउंट चल रहा है सर, अच्छा। यूज डिफॉल्ट आउटलुक अकाउंट के लिए बोल रहा है सर। ओके ठीक है, बट वो तो आ रहा है, आपका ऑप्शन तो आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है, उसको आउटलुक सिलेक्ट करने के बाद सेंड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो अनेबल टू सेंड ईमेल मैसेज ऐसे पॉपअप आ रहा है। नो, योर अकाउंट इज वर्किंग। सर मेरा आउटलुक में कोई अकाउंट नहीं है अभी, इसलिए हाँ, शायद हो सकता है। ठीक है, बट दैट फंक्शनैलिटी इज वर्किंग। यस सर, फंक्शनलिटी इज वर्किंग। So place mark, we have seen adding polygon, we have seen point also in the same fashion you can add. Now there is one more option, someone was also asking about the image overlay. So how to overlay the image? Anyone is done with this image overlay? Not? Sir, we can use the
image as a raster, another raster image, and it is imported in the Google Earth using the Google Earth new image overlay option. Hmm. Okay. But for this, first you have to have one image, right? Yes, sir. So you can save that image somewhere. If you don't have any image, you can click any snap, including yourself, and save it, and then you can link it. So it may be India map, political or vegetation map. Yeah. Anything you can put as an overlay, no problem. That's why I told you, if nothing is there, you can put your own photo also. So any raster you can overlay. So but I don't know. I am not confident whether you have performed all these operations, huh? All these functions you have to try. And the same image overlay is also there in the next exercise. हेलो Yes. सुनील सर, जस्ट एक जगह है जैसे कि लेक है यहाँ के, मैंने सिटी का लेक का 2014 का एक स्नैप लिया है एंड आज का स्नैप लिया है, तो उसमें वो इमेज ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? देखिए स्नैपशॉट थोड़ा सा okay, still you can overlay. See, next exercise we have a good amount of exercise on overlay. Exercise number 5. Once we'll park this question for some time, because there already we have something to do it. So first, any doubt on exercise number 4? But you have add overlay in the image overlay in the exercise 4 also, na? That's why you are asking. Yeah, can you repeat what was the question? सर उन्होंने बोल रहा था कि कोई एक इस लेक का फोटो पिछले साल का लिया था, उसका अभी एक साल का रिसेंट जो इमेज है उसके साथ ओवरले कैसे करें? हाँ, तो उसमें इमेज पे आपको जहाँ पे लगाना है ना इसको, वहाँ पे आपको पाथ सिलेक्ट करके उसको
लिंक करना पड़ेगा। सर लेबोरेटरी एक्सरसाइज 4.5 में एक क्वेश्चन है सर। तो सर वहाँ पे बोल रहा है कि सेव्ड इमेज ऑफ हाईटेक सिटी हैदराबाद इन 3D व्यू शोइंग टाइटल स्केल एंड कॉम्पास एज अ मैप एलिमेंट। सर उसको कैसे यहाँ से दिखाए सर? क्या है एक्सरसाइज 5 में, ये किस पे है? अभी सर 5 में लैब हम गए एक्सरसाइज, नहीं। सर 5 लैब में एक्सरसाइज 4.5 फॉर सर फॉर सर एक्सरसाइज में 4.5 वो। एक्सरसाइज यस एक्सरसाइज सर, 4 में है, लैब एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4 में ही है सर वो। और लेना, यस सर और ले योर। ओवरले तो एक्सरसाइज 5 में है सर। चलिए मैं एक इसका डेमो करता हूँ। Actually, no, sir, I have prepared a practical file, okay, for this exercise 4 and 5. Okay. But I just followed the manual, and whatever screenshot that I have to attach in the practical file, I'm just taking out from here exactly what is given in the exercise manual that I did it, and I'm just putting the output of that screenshot. Okay. Will that be okay, sir? Yeah. You can share with your colleague. So I'm just putting the overlay. It's a very easy, handy function. Just I'm showing the option. Later on, you can try also. See, here is this overlay button. Okay, right. You just click on it. What you have to do, you have to give the path first. So before giving path, you have to save. You should have some file, no, on your system. Okay, so I don't know which file I should take. Is there anything? I don't know. There should be something in the cell phone. These all are images only. I don't know what images, what for it is. These all are photos. See, you have to just give the path. Now I think this is somewhere the IGNU course only. Maybe some screenshot. You can zoom it, and you can adjust also. So this is the overlay. Is it okay? How to add? Yes sir, okay. Yeah.
Then what else? I think this historical images some colleague have shown. So you tried all this. Anything is not working. Sir, I tried a recorder tool, but where it will be save or something like. Recording tool is where. ओवरले के बगल में है सर. हाँ, Just ओवरले के बाजू में ही है. हाँ. This one you want to say recording tool. Yeah, recorder So, tool. so it will record, but you mean to say where it is going? You are not aware here. So where Yes, it yes. is saving the file is doubtful, right? हाँ, वो So सेव कहाँ पे होता है? it might be going by default. We have to check its default. Wait. Save. No doubt it is going to its default only. Default we need to check. Hopefully it is. प्रेजेंट करने के लिए या इन द फ्यूचर आई वांट टू एक्सप्लोर इट, तो कहाँ से दिखेगा मतलब? नहीं, ये आपको तो दिखेगा. आप जैसे अपना ओपन करोगे ना, it will be available for you. It will remain. क्योंकि आपके अकाउंट पे है तो ये इट विल बी अवेलेबल टू यू ओनली. और अगर आपको सबको दिखना है इन जनरल, जैसे ये दिखते हैं ना बाकी यहाँ पे लेबल्स, अगर वो यहाँ पे दिखने हैं ऐसे, देन दैट वी कैन नॉट ऐड इट डायरेक्टली. लेकिन जो आप ऐड कर रहे हो ये आपके सिस्टम पे नहीं सेव होगा, वो यहीं पे सेव हो रहा है. वही आई वाज जस्ट चेकिंग whether it is getting saved on the system also. मे बी होपफुली ये टेम्पररी कैचे वगैरह में रहता होगा, बट इट इज़ नॉट बीइंग सेव्ड ऑन द योर हार्ड डिस्क. इट इज सेव्ड ऑन दिस गूगल अर्थ इंजन इटसेल्फ. Yes, want to say something? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम गूगल अर्थ पे कोई ऑफसेट पाथ बना सकते हैं? लाइक मैंने एक लाइन पाथ बनाया है और मुझे एट सम डिस्टेंस एक ऑफसेट पाथ बनाना है, तो क्या ये गूगल अर्थ पे पॉसिबल है? Offset path, you want to make a parallel path to that? Yes, sir. At some distance, at some certain distance. Understand. I doubt it will allow. I mean this. नो, इसमें ऑप्शन नहीं दिखता है उसका ऑफसेट के लिए. यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल इन GIS सॉफ्टवेयर्स, बट इसमें ऑप्शन नहीं लग रहा है मुझे. ओके. इसमें अभी एक्सरसाइज 4 में
ओवरले हो गया, रिकॉर्ड टूर समझ में आया ना आपको? लेकिन वो तो पूछना ही भूल गए हम लोग। चलिए, रिकॉर्ड टूर में क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सिंपली आप किसी वीडियो या रिकॉर्डिंग करते हैं ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो रहा है? आपका स्क्रीन का मूवमेंट। एक करते हैं डेमो क्विकली। अच्छा, मैं जस्ट मिनट, माय स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड आई थिंक। या देखिए, सेम जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हो, सेम फैशन में यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अब नाउ आई एम स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग। ये बटन है, आपने भी ट्राई किया होगा। यहाँ पे क्लिक किया एंड what your title you want to give. Title overlay, let us keep it as it is, one, and say okay. सर वो तो इमेज ओवरले ना? That's why it is asking me wrong thing. So this is my recording. It is this pop-up is below here. Hope it is visible. इसको भी हटा देता हूँ। It is coming here. So once you start recording here, now I have started the recording. So I am zooming the screen, I am zooming out the screen, I am, whatever I do on my screen, it will record. Okay, so let us stop it and see what it has recorded. Okay, see, automatically it is playing. Okay, so this is the utility. For example, sometime you are doing some let me stop this. So sometimes you search something on the Google and then you want to record it so that next time also you can easily find it out. So simple way, you just record it and save. So automatically it will be available to you on your account, so that anytime you can go back and again find it. Okay, so that is the record function. Anything left from the exercise, or we have covered most of the things? Can you suggest if anything is left in the exercise or record tour? Hope historical images you know, correct? Or do you want one more time I to explain? Rural हो गया। Hope you might have tried zoom in, zoom out. Have you tried these options or not? So just click on the mouse. You try. Yes. Yes, Binayak, you want to say something? Sir, can you tell me about the options like viewing weather conditions and terrain? Terrain condition and weather. Sir, viewing weather conditions and terrain. That options are below. You are saying this. Okay, let me share my screen. Okay.
Hope screen. You are saying about this these, na? Can you see my mouse? Yes, yes. Layers, basically. Yeah. Let me clear little bit so that clumsiness will be there. So let us go through all this layer menu. Here we have few more options. Generally, when you navigate and see, you require sometimes say the state boundaries and district boundaries. Sometimes you require the places name, road name. So this you can manage from here. Let me so the places will go one by one. Now places I have add, switch on. Borders I have switched off. Okay, can you notice this line? Can you notice this line? Is it visible or shall I zoom it little bit? Can you see this line? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Hopefully, I think this is Uttar Pradesh, maybe boundary between two states. So if I switch off here, see this boundary is not there. Okay. So borders and labels. So both labels are going, borders are also going. Okay. So similarly, the places also you can check in, check out. Similarly, photos come one by one. So photos not everywhere, because see, photo will be only at the place where someone has added. Like if you see this, I don't know whether it is visible at your end or not. Some tourist place, something, you can see some photo here. You can see another photo. That depends on our application what we want. So if you are interested in the photos, you just check in. If it is not checked in, so though photos are there, you will not get the photo. Similarly for the roads, you check in, you will get the roads. Whenever there is roads, you will get. I will just remove this road. Then next is 3D building. Just check in. If there is 3D building, you will get it. If it is not, you will not get it. So that depends on if the feature is there, you will get it. Okay, after 3D, let us, next one is weather. Okay. I hope in the weather it is giving only clouds information. Weather clouds. It is only giving cloud information on the cloud. Okay. Someone has asked the question on what is there in the weather, but it is giving only the information on cloud.
Let me check where it will. Maybe if we have June July image, it might be showing. Mm, mm. Difficult to gauge the clouds because I'm unable to tell. Okay, I'm unable to get the clouds, but it is giving information on the cloud cover. Then gallery, again gallery means you will be getting lot of so it is giving information on a particular location where it is available, not all. So but basically what happens, so this is some temple, so more you keep checked in, you your operation will be slow down, application will be slowed down. Then terrain, there are few more also if you have gone inside. Are you noticing any difference on my image, sorry, screen? Let me zoom little bit and see whether you can. I am just check and uncheck terrain. You get little feel of 3D type of the thing. You can check on your system. It's There is little some bit change. texture added. Huh? Pardon? टेक्सचर जैसा कुछ दिख रहा है. Yeah. It is giving you basically the how the terrain is on the earth surface, like hill, valley, something like that. So, but you can just check in and check and uncheck. You will get it. Okay. Yeah. Apart from this, anything else in this exercise which
which you want to go through, or you want me to again go through? So keyboard shortcuts and this you can try. Okay, to move left, right. Basically, most of the things you can manage using your mouse itself. थोड़ा 3D भी ट्राई करो ना, किसी ने किया क्या 3D ट्राई? Okay, by that time I will search some 3D building so that I think here I will get it. Yeah, that time I was searching some 3D big building uh, around Delhi. But anyway, that I have some tall building. I remember later on, and I searched tall building, and I just want to show you how the 3D feature will affect. Okay, so this is the famous place called Burj Khalifa. You know, everyone know where is my 3D. Yeah, so this is Burj Khalifa. I will zoom so that online sometime it may not visible. Now I have zoomed to the maximum extent so that you can see, and I am turning on my 3D. Okay,
Here it is. You can just note the difference in the image. Can you able to see the difference? Now again I am uncheck these 3D buildings. Is there any difference? Don't confuse, because this is the very tall building and hopefully this is shadow. I hope. So again I am checking in. Can you see the difference? Okay, you try on your system also. Or do you know any some tall building in India also we can try? Statue of Unity, sir. Acha, Statue of Unity. Okay, let me try. If it is there. STACH. सरदार पटेल जी का आना चाहिए. Yes, sir. It's coming like 3D buildings. Oh, there are so many points. Exactly, we have to find out the. no, sir. What? It's visible. Huh? Sir, visible है. Wait a minute. नहीं, 3D तो दिख रहा है. मैं आई वाज जस्ट वो जो जहाँ पे एग्जैक्ट उनका स्टैचू है ना, सरदार पटेल, ये तो दिख रहा है. पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ओ इसमें. अदरवाइज यू कैन सी द क्लियर कट अप्स एंड डाउन्स हियर. Sir, I shared. Yeah, here it is. Yes. Acha. Okay, you are sharing. Wait. I will stop. Yeah, now you can project. Yeah. So here Z is also captured. X, Y, and Z. All three are captured. Okay, fine. Everyone please try some of the options. If there is any issue or any of the option is not working, or you are unable to understand and appreciate how it is, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. थोड़ा टाइम और लगाते हैं इसमें, 2-4 मिनट, और देन वी कैन मूव ऑन. वैसे ये दोनों एक्सरसाइज जो है 4 और 5, ये हैंड इन हैंड ही है, तो सिमिलर ही है बहुत. थोड़ा 5 मिनट और लगाते हैं.
सर ये गूगल अर्थ पे एक ऑप्शन है स्काई मार्स एंड मून का, इसका कोई रिलेवेंस है, कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा मैं सुन नहीं पाया, वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? Yes, yes, sir. Sir, I'm telling there is one option हाँ, of sky, Mars, and moon. that that we have not touched. Because you know, first Google Earth has started. Okay, then they added on the sky and Mars, and even now they are thinking for other galaxies, other part of the universe to add. Okay, so you just click it. I have not used that feature practically, but for fun sometime I have used. Okay, sir. Just it will give you, I mean, the feel of the sky and earth, how it is. You just click and see. It will make you tour. Correct? Yes, sir. Yes. Yeah, it will show you पूरा. अब जितना भी उसमें जूम करते जाओगे, but from the data point of view, we are not going to use it. Hopefully, some more pictorial representations. You can see moon, you can see rest of the things in the planet. और कोई पार्ट इसमें अनटच है तो बताइए, we can cover. Hopefully most of the things we have touched upon. अगर कोई छूटता है तो then that also we can cover. तो 5 एक मिनट लगाते हैं इसमें, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें हमने कवर की है।
चलिए, इस एक्सरसाइज में कोई इशू नहीं है किसी को? अगर है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। सर जो लेबोरेटरी एक्सरसाइज में दिया है सर 4.5 में, जो सेव्ड इमेज कोई कहीं जाएगा कि जो सेव्ड इमेज दिखाने के लिए उससे टाइटल, स्केल एंड कॉम्पास सर मैप एलिमेंट, उसको कैसे करें सर? एक सेकंड, क्या दिया है? 4.5, लेट मी गो टू द 4.5, 4.4। सर एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 4.5। हाँ, नहीं, एक्सरसाइज नंबर 4 में आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, वो लास्ट में देखिए सर, लेबोरेटरी एक्सरसाइज में लिखा है लेबोरेटरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 सर। अच्छा, उसमें आप गए। रेफरेंसेस, एक्सरसाइज, एक्सप्लोर योरसेल्फ, laboratory exercise. Okay, question number 2. Saved हाँ image सर। of high-tech city Hyderabad in 3D view showing title, scale, and compass as map element. थोड़ा इस एक्सरसाइज के हिसाब से एडवांस है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइटल डालना है, स्केल एंड ये करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। एक मिनट, फिर भी करते हैं। कहाँ गया एक्सरसाइज? अरे, मेरा स्क्रीन सेव नहीं है क्या? एक्चुअली इजीएस्ट तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, उसको कैसे करोगे आप, बहुत आसान है। मैं तरीका ही बताता हूँ आपको। कहाँ गया स्क्रीन शेयर? लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर अ सेकंड एंड देन विल मूव शेयर। कहा ये है सर्च स्टैचू ऑफ यूनिटी। अरे ये, सॉरी, ये शायद अर्थ नहीं है। अर्थ में मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा। ये आपका हाईटेक सिटी, थोड़ा जूम करेंगे ना आप? आपको हाइट, आई डोंट नो, आपको हाइट फील हो रहा है क्या बिल्डिंग का? और जूम करता हूँ, थोड़ा हो रहा है? आपको लग रहा है बिल्डिंग दिख रही क्या, या 2D दिख रहा है, 3D दिख रहा है क्या इमेज में? सर हाइट दिखा रहा है, तो अभी इसका थोड़ा टिल्ट करेगा तो उसके साथ हाइट भी दिख जाएगा। ये दिख रहा है हाइट, अभी मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा जूम किया था। तो आपको एक अप्रोप्रिएट जूम मान लीजिए इतना है, आपकी स्क्रीन पे करोगे तो दिखेगा। ये जब आपको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो आपका छोटा सा स्क्रीन दिखता है। थोड़ा मैं जूम करूँगा तो आपको ये हाइट दिखेगा, लेकिन आपका स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ये दिखा, हाईटेक टाइटल दिखा, ये बिल्डिंग दिखा, आपको ये दिख रहा है, नेविगेशन बार दिखेगा। और इसको भी हटा दो, यहाँ भी ये नीचे का आपको यहाँ दिख रहा है। आप चाहे जो अच्छा वाला इमेज रहेगा, ये हिस्ट्री किसने बताया था शुरू में, फर्स्ट जिन्होंने प्रोजेक्ट किया था, तो इसमें से आप चूज कर लीजिए जो भी अच्छा दिख रहा है दिखने में, एक इमेज। और इसको यू कैन
एक्चुअली इसको एज इट इज भी आप अगर स्क्रीन सेव करते हो, इसको इमेज सेव करोगे, तभी भी ये आपके सारे फीचर आ रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट क्वेश्चन, बट मैं इसको ये बोलूंगा कि जब आप इसको मैप कंपोजिशन में लेके जाओगे, वो एक्सरसाइज आगे होगा होपफुली आपके सिलेबस में, तब इसको आप और डेकोरेटिव करके प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ये एक्सरसाइज के लिए इतना भी आपको चलेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलो देन आई हैव टू स्क्रीनशॉट दिस फोटोज ओनली, तो हाँ यू टाइटल कैन, स्केल। हाँ यू कैन स्क्रीनशॉट कर सकते हो या सेव एज इमेज, जैसे भी मर्जी आपको उसको लेके जाना है और वो कंप्लीट करना है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो अभी जो आपका एक्सरसाइज 5 में और कोई क्वेरी है कि इसमें? नहीं सर। चलिए अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद जो एक 4 और 5 कॉपी किया था वहाँ पे, वहाँ से आप सीधा ये एक्सरसाइज, ये 5 नंबर है, तो इसमें अगर हम आते हैं तो इसको भी कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। फाइंडिंग प्लेस यू नो, ओके। सबसे पहले जिसने प्रेजेंट किया था, मैं भूल रहा हूँ नाम वो स्टूडेंट का, तो उन्होंने टाइप किया था एक लोकेशन वाराणसी या समथिंग, वहाँ पे टाइप करोगे ये आ जाएगा। ओके, सिमिलरली उसमें ये भी आया था कि हिस्टोरिकल इमेजेस कैसे देखने हैं, अभी भी हमने देखा था, जस्ट क्विकली मैं एक बार ये है आपका, आपको अगर ये 25 में ऐसा दिख रहा है, ये कहाँ का था, ये 2010 का हाईटेक ऐसा था, अच्छा ही था तभी भी। और पीछे आते हैं 1985 का दिख रहा है मुझे, अभी थोड़ा उसको टाइम लग रहा है, आया नहीं है अभी, वेट करिए। ये 1985 का इमेज थोड़ा ब्लर है, और क्योंकि इसका रेजोल्यूशन अलग है, थोड़ा और पीछे आते हैं, यहाँ पे आ गया मैं। तो ये हिस्टोरिकल ऐसे आप इमेजेस स्क्रॉल करके देख सकते हो कि आपको इसमें दिखेगा कैसे डेवलपमेंट हुआ है वो भी। इसको स्लोली टारगेट करना पड़ेगा, जैसे ये एरिया में जस्ट दिखाने के लिए इसको जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल इमेजेस कैसे देखनी है। अब ये कब का था, ये है 22 दिखा रहे, 2022, और इसको 25 में आता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा था आपको, बारिश 22 में, कलर नोट नोट करिए। अभी यहाँ क्या दिख रहा है आपको, मैंने ऐसे रैंडमली एक एरिया लिया है, तो यहाँ पे अभी देखिए क्या दिख रहा है। और ये हम गए थे 22 के आसपास, 21 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बता सकता है क्या कोई, ये क्या है? सर फॉरेस्ट्री है सर ये। अच्छा, फॉरेस्ट। अब 2-3 साल आगे चला, आप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे सेम लोकेशन? फॉरेस्ट जस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये तो सर पूरा पूरा बंजर खाली हो है यहाँ गया, पे। हाँ काट सर। दिया पूरा फॉरेस्ट। बैटरी इज रनिंग लो। तो इस वे में आप हिस्टोरिकल देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा है अभी फॉरेस्ट, 19 में थोड़ा सा है। सिमिलरली ये एरिया को गौर करिए, अभी का है ये, और मैं 2-3 साल पीछे जा रहा हूँ, यहाँ पे तो बिल्डिंग दिख रहा है, पीछे आया 2 साल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और पीछे आया साफ हो गया। ठीक है, तो इस वे हिस्टोरिकल डाटा हम देख सकते हैं। ओके, तो
Finding place and image history, no problem. ये भी हमने देख लिया. You have created the places. ये भी देख लिया, path and polygon. ओके. इमेज ऐड करना भी सीखा हमने. ओवरले ट्राई किया क्या आपने? हाँ सर, ट्राई किया था. ओके, आगे चलते हैं. ये भी किया, मैंने दिखाया था कुछ उसमें. टेरेन इंटीग्रेशन नहीं किया? नहीं किया सर. ट्राई करिए इसको एक बार. ठीक है, डिलीट करना, जो किया है उसी को डिलीट करना है. चलिए, टेरेन इंटीग्रेशन से आगे करते हैं स्टार्ट. ओके. ओके सर. जो नहीं हुआ है वही करिए. हेलो. हेलो सर. यस आई. यस यस. हाँ सर, वहाँ पे जो लिंक दिया है उसके साथ एक फाइल डाउनलोड किया तो उसके. वैल्यू, हाँ, वैल्यू ऑफ फ्लावर. यू कैन डाउनलोड एनी फाइल जस्ट टू सी. उसमें ये है कि आपने फाइल जो डाउनलोड कर रहे हो उसको ओवरले हाँ. करते हैं तो वो एग्जैक्ट सारे मतलब टेरेन को फॉलो कर रहा है क्या? जैसे हिल पे जा रहा है, वैली पे आ रहा है, वो मैच कैसे कर रहा है वो देखना है. अच्छा मतलब अच्छा दोनों सिमलेसली हो रहा है. क्योंकि आपका एक मैप तो 2D है, दूसरा आप 3D पे डाल रहे हो तो 2D भी 3D में फिट होता है. वो आपको जस्ट अच्छा. विजुअलाइज करना है करके. और कोई भी मैप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कुछ दिया होगा वही मैप करना है, जरूरी नहीं है. एनी मैप यू कैन यूज. अच्छा. ठीक. उत्तराखंड रिलीफ मैप भी है. यू कैन ट्राई एनीथिंग. Sorry, sir. Can I get the exercise PDF? Exercise PDF. Okay, I have already shared. Just wait, I will share it again. Okay, I think I have. And if you done, you can just give brief demo on this. By that time, I'll copy the link again. Where is the chat? Google Drive. Yeah.
Yeah, I have shared the link again, and I am keeping this link till the course is over. So other colleagues also, if they join later on, they can just download if they don't have the exercise. मैं कोशिश ये करता हूँ नहीं शेयर करने की, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपके अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट है इसमें, 2-3 कोर्स के, तो हो सकता है आपके एक्सरसाइज नंबर अलग हो या थोड़ा सा टाइटल अलग हो। मोर और लेस अंदर का जो टेक्निकल लिटरेचर है वो सेम ही होगा। तो बेटर ये होता है कि अपना कोर्स का ही अगर पीडीएफ है तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। बट फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज आई हैव गिवन द लिंक। हो जाए तो डेमो स्क्रीन शेयर कर लेना। यस कुलदीप। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इमेज ओवरले के लिए जो इमेज हम ट्राई करें उसमें ओपेसिटी कम हो या ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, ऐसा इमेज में कहाँ से मिल सकता है? आप उसके प्रॉपर्टीज में जाके सेट कर सकते हो ओपेसिटी परसेंट में कितना चाहिए, 0 से 100 के बीच में। यू जस्ट check its see its properties and you will be able to manage. नहीं, लाइक हम गूगल से कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसकी ओपेसिटी हम चेंज कर सकते हैं क्या किसी भी इमेज की? हाँ नहीं, आप जब उसको ओवरले करेंगे ना ओके। तब आप उसको मैनेज कर सकते हैं ना वहाँ पे। आप ऑप्शन को ट्राई करके देखिए, होप यू विल बी एबल टू मैनेज। ओके सर। यस। और मैं फॉर द बेनिफिट क्विक एक डेमो देता हूँ। शेयर द स्क्रीन। मैंने जस्ट एक क्विकली मैप लिया है। मैंने उसके स्टेप्स आपके फॉलो नहीं किए, जस्ट टू डेमोस्ट्रेट। तो ये आपका जो वेबसाइट था जहाँ पे आपको लिंक दिया था, वो लिंक आपका जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक मैप लेके, ये इसमें बहुत सारे मैप्स है, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए आई थिंक इसको चूज किया था, ये वाला। और ये मैप मैंने सेव कर लिया अपने हार्ड डिस्क में। और एज यूजुअल यहाँ पे जाके ये ओवरले वाला बटन दिख रहा है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसमें मैं गया। इसमें जाने के बाद मुझे ये डायलॉग बॉक्स मिला और इसको ब्राउज किया, ठीक है। ये ब्राउज किया जहाँ पे मेरा इमेज डाउनलोड करके रखा था, वहाँ पे मैं गया, उसको ऐड किया। जैसे मैं वहाँ गया तो ये मैप मुझे मिला
और ये जो आप ओपेसिटी बोल रहे हैं ना कुलदीप, ये देखिए यहाँ पे आप इसमें से ये देखिए मैनेज आप आराम से कर सकते हो, जितना चाहिए लेवल रख सकते हो। और ये देखिए ये एग्जैक्ट ये मैच भी हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका अपने आप। यहाँ पे शायद मुझे और जूम करने का, हाँ हो रहा है जूम, मैं इसको और जूम करता हूँ। ये पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया लिया है इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा है नीचे का इमेज, देखिए और कम करेंगे तो ये अभी देखिए पूरा इसको बहुत कम किया तो हल्का सा दिख रहा है, आपको शायद फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि तो ये फंक्शन है। लेकिन एक बार आप अपने से सब लोग करिए इसको, कोई भी इमेज लीजिए, जरूरी नहीं कि जो आपके नोट्स में दिया है उसी को लेना है। यू टेक इमेज एंड यू ट्राई इट, ओके। लोकल इमेज अपना फोटो भी डालना है डाल सकते हैं। तो ये हो गया, आप ऐसे करिए, ट्राई करके आगे चलिए। जो हमने पहले कवर किया है एक्सरसाइज नंबर 4 उसको भी छोड़ दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट करने का जरूरत नहीं। इसमें क्या है ना, इमेज आपने डालने के बाद थोड़ा सा इमेज को पोजीशनिंग भी आपको करना पड़ता है, जो आपके 5.44 में दिया है। तो आपको थोड़ा सा इमेज को एडजस्ट करना है, यू कैन एडजस्ट इट सो दैट आपको मैचिंग अच्छा आएगा। I think transparency is also given in below in the same exercise.
सर यस सर इसमें प्रैक्टिकल में कैसे पूछा जाएगा, मतलब इन द एग्जाम? जनरली व्हाट आई नोटिस्ड, एक एक दो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज दिए जाते हैं। अब डिपेंड करता है आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कैसे होगा आप पता है क्या? क्या अनाउंसमेंट है इसका? सेंटर में जाके देते हो या करके सबमिट करना है? सर वी आल्सो डोंट नो एज इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर अस। ओके, क्योंकि बीच में क्या हुआ ना, अभी थोड़ा कोविड आया, थोड़े डिस्टरबेंसेस हुए हैं, तो उससे पहले तो सेंटर में होता था, तो तब जनरली क्या होता था, एक दो एक्सरसाइज दिए जाते थे करने के लिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स वो करके देखा जाता था कि स्टूडेंट का नॉलेज कितना है, कितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, उस टाइप का। ऑफलाइन होगा तो, ऑनलाइन होगा तो देन आई डोंट नो उसका क्या, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा एक्सरसाइज करके, ऐसे कुछ होगा। तो शायद इसका ऑफलाइन है, क्योंकि हम लोगों का तो एग्जाम है इसके जून में से, जून महीने में तो हाँ, जून में आपका प्रैक्टिकल। एग्जाम है। हाँ, तो हाँ प्रैक्टिकल अगर सेंटर में होता है तो फिर जो अभी आप कर रहे हो ऐसे टाइप का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ सर, उसका एक आज लैब, एक नोटबुक, लैब नोटबुक बना के वहाँ पे सबमिट करना होता है सर। हाँ हाँ, तो जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसका या असाइनमेंट टाइप? सर यहाँ पे जो लेबोरेटरी एक्सरसाइज लिखा है ना सर, वहाँ पे सबमिट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर काउंसलर फॉर इवेल्युएशन, ऐसे करके जो लिखा है उनको करना होता है, फिर उसको करके सबमिट करने के लिए बोला जाता है। हाँ, तो वो शायद आपका प्रैक्टिकल मैनुअल है, तो हाँ डिपेंड सर। करता है आपका मोड क्या होगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है अभी मोड क्या रहेगा एग्जाम का। दिल्ली में कैसे हो रहा है सर? मुझे बोल रहे यस है सर। आप नहीं, अभी मुझे एक्चुअली सही में आइडिया नहीं है कि कैसे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आपका। ओके। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? यस यस। सर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे अभी हाँ एग्जाम होने वाले हैं जून में, और प्रैक्टिकल का तो जैसे अभी ये काउंसलिंग वाला हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग अटेंड कर पा रहे हैं। स्टडी सेंटर हाँ। सर अभी तक अलॉटेड नहीं हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा असाइनमेंट का क्या करना है, कहाँ सबमिट करना है? मतलब कहीं पे कोई भी क्वेरी करने पे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा। तो सेंटर्स में भी जाके पता चल रहा है कि सेंटर्स वालों को भी कुछ पता नहीं है कि रीजनल सेंटर अभी क्या होंगे,
और कंसर्न अथॉरिटीज को मेल करने पे भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अभी जबकि हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर चुके हैं, एग्जाम देना है जून में, कुछ भी आइडिया नहीं है। Okay, maybe in that case, I think you can contact Dr. Benidhar sir. Hopefully, ओके, he will help you on that. ओके क्योंकि सर। अगर सेंटर पे आपका इंफॉर्मेशन नहीं गया है तो होपफुली दे विल आल्सो नॉट एबल टू हेल्प देयर. You contact Dr. Benidhar sir. He will be the ओके, right person to guide you. ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ओवरले अगर आपने किया है कंप्लीट, सर इमेज ओवरले डन हो गया, अभी आगे कुछ? डन हो गया. यस यस सर. ओके, आपने वो मैप डाउनलोड करके किया या एग्जिस्टिंग मैप से किया? हाँ नहीं सर, अभी जैसे आपने रैंडम इमेज बता के किया था ना, वैसे किया था. ओके, 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 गुड. तो उससे आगे फिर आप चलिए इसमें. नेक्स्ट क्या था उसका? इंपोर्टिंग पे चलिए, इंपोर्टिंग वेक्टर डाटा. तो वेक्टर डाटा ये है 5.6.2 है. तो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कैसे करना है वो देखा, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट दिया है KML फाइल और वो उसका स्ट्रक्चर और वो सब दिया है, वो थियोरेटिकल पार्ट है. तो उसको उससे आगे चलते 5.6.2 में, जिसमें कि दूसरा इंपोर्ट डाटा इसमें कैसे, दूसरा वेक्टर डाटा गूगल अर्थ में कैसे इंपोर्ट करना है. तो उसमें से एक मैप आप लीजिए. अगर आपके पास कोई वेक्टर होगा किसी के भी पास तो यू कैन यूज़ दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम. नहीं है तो वो लिंक में क्लिक करिए और वहाँ से आपको डाटा मिलेगा. वो डाटा को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये वेक्टर है तो थोड़ा डाटा साइज इसका होगा. तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग कंट्री यू कैन सिलेक्ट स्टेट आल्सो. अगर जिनका इंटरनेट स्पीड का इशू होगा दे कैन सिलेक्ट स्टेट. छोटा फाइल आएगा तो जल्दी हो जाएगा. जब उसमें जाओगे फाइल में तो उसी डाटा को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर कोई प्राइस नहीं लिखा है, जीरो लिखा होगा, वही डाउनलोड होगा. बाकी उसमें जाएंगे तो होपफुली वो मांगेगा आपको लॉगिन करो ये करो, तो जो फ्रीली है वो ले लो. सर आप दिखा सकते हैं क्या? हाँ, मैं दिखा देता हूँ. अच्छा, शेयर करना है, स्क्रीन शेयर नहीं है मेरा. मैं आपको दिखाता हूँ आपके एक्सरसाइज में कहाँ पे है. लिंक दिया है इंपोर्टिंग. ये देखिए, ये इंपोर्टिंग वेक्टर डाटा एज अ KML फाइल जो है ना, तो इसमें आप जाओगे, ये वाला लिंक जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये खुलेगा. ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है. यहाँ से सबसे छोटा जो भी है वो आप ले लीजिए, जिसके ऊपर ये प्राइस जीरो है.
प्राइस 0। तो ये हो सकता है कि आपको जल्दी मिलेगा। इस पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे मैंने लगाया ऑलरेडी एक डाउनलोड, छोटा स्टेट। तो यहाँ से अंदर जाएंगे आप डाउनलोड लिंक में, तो वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और उस डाउनलोड फाइल आप सेव करोगे एंड देन यू कैन इंपोर्ट दैट इनटू योर जीआईएस, इसमें गूगल अर्थ, और वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। ओके, it's not downloaded it. It's asking captcha 6J use 8 9. It is taking time actually downloading. सर यहाँ पे क्या ड्रेनेज के मैप भी मिलता है? मिलेगा, मेजर ड्रेनेज तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो है या नहीं मैंने चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, भुवन पे मिलेगा। मेजर ड्रेनेज तो मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। नहीं, वो 5th ऑर्डर तक नहीं मिलेगा ना? वो थोड़ा डाउट है, लेकिन उसमें क्या है, मेजर अगर आपको स्टडी पर्पज के लिए चाहिए मेजर ड्रेनेज मिलेगा, तो उसी को थोड़ा सा एडिट करके एक्सटेंड कर सकते हो उसको टोपोशीट पे या सेटेलाइट डेटा पे डाल के। अच्छा, So can we download from the case the drainage and other data? नीरज, थोड़ी आवाज कट हो गई, क्या बोल रहे ड्रेनेज का? So can we download from the QGIS the drainage? QGIS से भी कर सकते हैं डाउनलोड। QGIS as it is not keeping this data, but it will extend and it will fetch the data from other open source platforms. Okay, so है QGIS में। Hello friends, hope you all have completed your today's exercises. Sunil sir? Yes, we are towards end. जी। I hope learners have not bothered you much. नहीं, it's enjoyable exercise, though Okay, it is a little long day. But I also enjoyed working with students. Yeah, as mentioned in the beginning, it is also time for all the learners to learn from your experience, your Yes. very long and vast experience. Of course, sir is very down to earth and also very helpful, and has a very is very patient. We have seen learners asking the same question repeatedly, but he patiently replies to all the queries.
Sir also has a long experience in hyperspectral remote sensing. So he had collected in situ spectra for various kinds of soils in various parts of India. Uh, so he has a good knowledge of the spectral response of various kinds of soils and other surface features. His thesis is remembered for being, say, a good piece of information. If I remember correctly, I think his thesis was in 2 volumes. PhD thesis, right, sir? Yes, yes. Yeah, yeah, it was a long, but much appreciated. Sir, I would request if you could share those thesis to us. Thesis you can find in e-Gyan Kosh. You can search for any thesis, any topic. Okay, so you can visit that. Sorry, Shodh Ganga. Shodh Ganga is a portal of UGC, Ministry of Education. You can find that there. You So can search Ganga. by his name. You can find by his name. Anna sir? Anna sir? Yeah, hopefully I think it is there. Yeah, it should be there. It should be there, yes. Yes. So anyone able to download the data, or still it is going on? Sir, I downloaded one physical map of India from Survey of India site. No, it is, I mean, vector. I have one vector file also, but some other uh, Jharkhand map. No, anything. See, our purpose is to import the vector into the Google Earth. So you require vector data for that. So then only we will able to do this. Yes, yes, sir. I have one vector data. Yes. Yeah, you can then go to the file and import it into the Google Earth. So it is taking, for me also it is taking some time. I have taken Goa state, thinking that it's a small and it will download quickly, but still vector data are bigger in size, so it is taking some time. ओहो मेरा माइक्रोफोन ऑफ था. So by that time you are downloading the file. Okay, so I will show you the option, so that once you download the file you can follow the same path. Let me share the screen. Option is very simple, nothing to worry. Okay, so what you have to do, first you have to download. आपने फाइल डाउनलोड कर लिया, उसके बाद थोड़ा ये देखना है आपको कि वो कॉम्प्रेस्ड जीप फाइल है क्या. होपफुली जितने भी ये ऐसे डाटा डाउनलोड होके आते हैं तो वो जीप जीप कॉम्प्रेस्ड फोल्डर में आता है. अगर ये कॉम्प्रेस्ड फाइल है तो उसको आपको अनकॉम्प्रेस करना है. सिंपली विंडोज से भी हो जाएगा.
आप उसको एक्सट्रैक्ट करिए और दूसरी जगह पे सेव करिए। जितने फाइल्स होंगे, ये एक फाइल नहीं होगा, उसमें 7 8 या 9 फाइल होगा डिपेंडिंग ऑन द वर्जन। ठीक है, तो सेव फाइल भी होगा, तो सेव फाइल के साथ और 6-7 फाइल एसोसिएटेड होंगे। तो आपको उसका अभी बॉदर नहीं करना है, आपको एक्सट्रैक्ट ऑल करके अलग फोल्डर में आपने सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप गए फाइल में। ठीक है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, फाइल है, और इस पे जाके आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, अभी मैं टाइम बिंग के लिए ऑनलाइन डाउनलोडेड नहीं है, ये अपना एक्सरसाइज था किसी और कोर्स का, तो उसमें कुछ फाइल्स, उसमें से मैं एक एक पॉलीगॉन सेव फाइल ले रहा हूँ इसमें। तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इस फाइल को, और सिंपली किया मैंने ओपन। ठीक है, तो ये मैंने पहले किया था एक बार, तो मैं इसको रीलोड करने के लिए एस कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे नेक्स्ट पूछेगा, डू यू वांट टू अप्लाई स्टाइल टेम्पलेट। स्टाइल टेम्पलेट मतलब, इसका मतलब ये है कि जो आपका मैप इसमें जाएगा, इसमें आपको कलर कोडिंग कुछ देना है क्या, अलग अलग कलर से पॉलीगॉन को अलग अलग कलर से फिल करना है क्या, वो सारा इंफॉर्मेशन ये आपको पूछेगा। आपने अगर नो कर दिया तो ये एज इट इज जाके लोड करेगा, तो उसमें आपको खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप अगर इसको एस करोगे तो ये आपको बोलेगा यूज एग्जिस्टिंग, जो आपने ऑलरेडी किया है, अगर किया है स्टाइल टेम्पलेट तो उसको यूज करने की बात करेगा, या आपको न्यू क्रिएट करना है तो न्यू क्रिएट, क्योंकि अभी आपने एग्जिस्टिंग नहीं होगा आपके पास, तो आप न्यू में गए और आपने ओके किया। तो इसमें जो भी आपके आईडीज होंगे अलग अलग डाटा में जो होगा, तो उसी हिसाब से आपको इसको कलरिंग करना है। ठीक है, तो किस फील्ड को कलर करना है वो भी आपको यहाँ पे देना है, ये मैंने दे दिया। और आपको अगर सिंगल कलर करना है या रैंडम कलर करना है वो भी आप इसमें दे सकते हैं, एंड इसको आप ओके करेंगे। माई स्टाइल सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, आई विल सेव टेम्पररी। उसके बाद ये फाइल आपके इसमें जाके लोड होगा। ओके, हुआ किसी का डाउनलोड? नहीं हुआ? यस सर, हो गया। हो गया सर, पूरा हो स्टेट गया किया सर। या कंट्री का किया? स्टेट स्टेट किया। कौन से? चलिए ओडिशा कोई सर। बात नहीं, एक बार आप उसको जो आपके एक्सरसाइज में डाटा है उसके साथ भी करते हैं, तो आप उसको करिए इसमें इंपोर्ट।